पेंशन मेमो कमल सिंह राजपूत। रसीद टेम्परेरी बेल है, 65 साल का आदमी सर, 3 किलो 200 ग्राम गांजा में 8 महीने से अंदर है सर। उसका स्वास्थ्य खराब है। क्या स्वास्थ्य खराब है सर? उसको तेज बुखार, वहाँ जिला कोर्ट में, वहाँ जेल में आवेदन दिया था सर उन्होंने, पर उसका मेडिकल रिपोर्ट बुलवा कम से कम 8-10 दिन के लिए उसको छुट्टी मिल जाए। मेडिकल रिपोर्ट बुलवा सर। मेडिकल ऑल्सो मेडिकल रिपोर्ट। क्या है यार तुम लोग, इनको क्यों नहीं ठीक होते हैं? जी श्री प्रणय शुक्ला। Lordship, one set of guest faculties are being replaced by another, your lordship. Various petitions has been decided by this court. और सर 31 तारीख के बाद वो दूसरी भर्ती कर देंगे सर, इनका ऑर्डर नहीं आया तो। आफ्टर वेकेशन मिलोट उसमें क्यों नहीं अपीयर हुए थे आप 11 तारीख को? ये शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल आप ही का है ये? नो नो, किसका है ये? राजेश कुमार के बात? जी जी, मेरा। हाँ बताइए, ये रिकवरी मैटर है। ये 11 तारीख को क्यों नहीं अपीयर हुए थे आप? वहां से ट्रांसफर होके आया था, यहाँ कोई एडवोकेट इंगेज नहीं हो पाया था। ठीक है चलिए, वेकेशन के बाद लग जाएगा। रिकवर हो जाएगा, आधा अमाउंट तो जमा भी कर दिया है। कोई बात नहीं। मिश्रा। Lordship, marriage of appellant sister is going to be solemnized on 9/6, Lordship. 9/6 बोलना? Yes, Lordship. Yes, on 6/6. श्री विकास प्रताप सिंह। Lord, IA is pending 13/5/2023. I am filing IA number suspension of sentence, my lord. 13/5 को फाइल किया? Yes, my lord. And during vacation application is also filed on, my lord. ठीक है, क्या मैटर है? Yeah. He is convicted under Yes. this section. My lord, under section 307 5 PS conviction, my lord. अच्छा, कब से कस्टडी में है? Yes, already, my lord, 1.5 years in jail, my lord. Immediately after vacation. क्या है ये? My lords, it is an election matter, my lords. There is a by-election in village Bokuro, my lords, and 35 people have been kept out of the voter list, my lords. A draft voter list was published. कब है चुनाव, कब है भाई? My lords, election is on 13th, but my lords, on 30th is the last date of nomination, and petitioner number 5 wants to file her nomination also. Notification कब issue हुआ था इलेक्शन के लिए? My lords, on 23rd 23rd May. 23rd को notification issue हुआ My lord. और लास्ट डेट 30 तारीख है। My lords, my lords, in page 228, I have attached the notification, my lords. On page 228, the program is there now. Page number 228, my lords. The second entry shows, my lords, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31/5। ठीक है, 29 तारीख
My lord, on 29th, my lord, if it could be heard today, my lord, because then she will not be able to file her nomination. 29 आपने बताया 30 तारीख लास्ट डेट है. My lords, but if on 29th it is decided, my lord, Then then she won't be able to file her nomination. क्यों नहीं फाइल कर पाएंगे? My lords, सीसी टुडे करके लीजिएगा कॉपी और फाइल कर if I may submit just one thing, my lords. Under Rule 12, my lords, the registration officer should pass a written order, my lords, if he doesn't decide my claim and What objection. will take care of it? Nitin Gulchani. Like, My lord, with due respect, my lord, these are Hajj Yatris, my lord, who has filed this petition challenging a circular, my lord, whereby, my lord, those pilgrims who have actually boarding from Bhopal has been charging, my lord, 70,000 each additional to those, my lord, who were boarding from Mumbai, my lord. कब हुआ ये? कब बोर्ड This circular is came on, my lord, on recently of this month, my lord, on 8th of किस तारीख का सर्कुलर बताइए ना तो 8th of May, my lord. हैं? 8th of May, my lord. That has been challenged, my lord, by before the coordinate bench also, my lord, and the relief has been granted by them, my lord. The judgment is also there, my lord. The difficulty is this, my lord. We have filed the representation also, my lord, and that has been kept under, ठीक है नेक्स्ट वीक my lord, if the same could be, my lord, accommodated today, otherwise, my lord, 29/5 otherwise, my lord, on 8th, अरे भाई 8 तारीख को जाना है 29/5 को लगा रहे हैं. much of this. I'm great. I'm great. Rohan Harne. Lord, I am only praying for withdrawal of this petition with liberty to file a fresh, properly constituted petition needs to be filed. कर दीजिएगा. This is in fact listed today, my lord. And listed Listed before the single bench of my lord, 262. सिंगल बेंच में है ये तो Yes. इसके लिए इसकी क्या जरूरत है जब सिंगल बेंच बैठेगी बता दीजिएगा विड्रॉ कर लीजिएगा. I'll do. इसकी जरूरत ही नहीं है. My lord, I have a humble prayer with regard to item number 74. Advocate GK 70? 74. जी Advocate Ekajan is out of station for medical reasons. He'll be back by tomorrow. So kindly the matter be taken up on Monday. क्या अर्जेंसी क्या है इसमें तो रिट अपील है ना. जी. ठीक है. श्री आपका शुभ नाम बताइएगा. Ganesh Singh. श्री दिनेश सिंह सबमिट्स दिनेश सिंह बेनाफर. Please. Shri Dinesh Singh Benafar submits that arguing counsel due to medical reasons is not available and prays for adjournment. On his request, case is adjourned list immediately after ensuing summer vacation. It may kindly be taken up on Monday. Right? There's no urgency, sorry. What are leading cases top of the experience to perform? सर कुछ एक रिक्वेस्ट करना है. हाँ बताइए. सर स्ट्रीमिंग 1 मिनट बंद करा दें. मेरा निवेदन है सर. हाँ बताइए ना. जी सर, लास्ट वर्किंग डे में जो भी हुआ, आप चैम्बर में आके बात करिए. सर चैम्बर में बात इसलिए नहीं करता चाहता सर कि बहुत सारे हमारे साथ के लोग जो है वो हम ही लोगों को कहते हैं कि आप लोग चैम्बर में जाके कुछ और बात कर लेते हैं. कुछ और क्या सर बात करते हैं. सर मेरा निवेदन सुनिए सर. मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले तो वकील साहब की तरफ से जो भी उस दिन उनका रिप्रेजेंटेशन था उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ. पूरी बार की तरफ से खेद व्यक्त करता हूँ. जो भी थैंक यू वेरी मच. जी थैंक यू. जो भी पिटीशन थी यदि प्रायोजक थी या जो भी था, जिससे हमें मतलब नहीं था. पर उनके हमारी बात सुन लीजिए 1 मिनट के लिए बस. हम उनसे 2 सवाल पूछ रहे थे कि किस प्रकार से कौन सी मान्यताएं हैं जो कि आहत होंगी. वो हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, तो ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप सुनना नहीं चाहते. सर वो मैंने देखा, पढ़ना नहीं चाहते. सर वो वीडियो मैंने बस नहीं देखा, पूरे देश ने देखा है. 10.5 लाख व्यूज में आए हैं सर. और जो उसमें कमेंट्स आ रहे हैं सर, वो कमेंट्स मैं तो देखता नहीं. सर आप नहीं देखते पर पूरा देश देखता है. पूरी न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है सर वो कमेंट्स. वकील साहब लोगों के खिलाफ भी आ रहे हैं, न्यायपालिका के खिलाफ भी आ रहे हैं, जजेस के खिलाफ भी आ रहे हैं. देखिए हम सिर्फ उनसे ये जानना चाहते हैं. सर मेरा ये कहानी हमने बहुत बाद में कहा. सर मैंने पूरा देखा सर. मैंने पहले ही खेद प्रकट कर दिया सर. वो बाहर की तरफ से नहीं कर दिया. क्यों भी बोला उसके. सर मैं ये कह रहा हूँ पर आपकी तरफ से भी क्रोध सर अति हो गया. ठीक है. सर विल टेक केयर ऑफ इट. विल टेक केयर ऑफ सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Sir, top of Amit Kumar Bajpayee. Heaviest call for lordship. जी. Krishna having minor girl lordship, aged about 17 years 3 months lordship. जी. He was missing from Abar Mela district Chhatarpur lordship on date 7/5/2023. Okay. Krishna lodged missing report on in police station lordship on date 8/5/2023. JP3. Yes lordship. P3 lordship. जी.
क्या कार्रवाई हुई इस पे? सर I'll seek a strict पहली बार लग रहा है ये हाँ, I'll seek a strict लिखिएगा श्री आरबी तिवारी R.B. Tiwari, learned counsel for the petitioner, submits that his minor daughter is missing since 7/5/2023. Missing person report was lodged as contained in NHF P3, but no action is taken to trace the corpus. Next, Shri Brahmdat Singh, learned Deputy Advocate General for the state, waits for time to seek instructions and produce the corpus. On his request, time is granted. List this case on 29 May 2023. Serial number 2. Serial number 2 Shri Suresh Kumar Rajak. क्या corpus इसमें मिल corpus गया? आ गई my lord corpus is there sure बताइएगा प्लीज. लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दीजिएगा. In the meanwhile, Shri Ajay Shukla prays for time to file reply to IA 12160/23. Let reply be filed within 4 weeks. List thereafter. Serial number 5. Serial number 5 Shri Just now. सर ऑब्जेक्शन अवेटेड रिकॉर्ड कॉल करना है. आपका शुभ नाम? देविका राजपूत. Miss Devika Rajput for the appealant. Appeal is filed against the judgment dated 3/4/2023, passed by first additional session judge Ashta District Seor in ST number SC लिखा है special case number SC/53/22. Appeal is admitted for final hearing. Record be called for. In the meanwhile, State Council may file reply to IA 12232/23. List of 4 weeks. Notice is also required. There is a POSCO, my lord. Notice is also. POSCO भी है. My lord. I issued notice to the victim. Serial number 6 Kamal Bhan Vishkarma. Lordship, it sent third IA for grant of bail for the offences hereto. Conviction held is LI, Lordship. Record आ गया इसमें. The earlier IA has been dismissed on merit, Lordship. That is, White order dated. initial IA was नहीं, dismissed मेरिट पे जो डिसाइड हुई है. lastly on 19th of July 21, Lordship. क्या चीज circumstances के लिए? Lordship, as there are no change in circumstances, though, but I am only pressing in the custody period, Lordship. कितना हो गया? She is more than behind the 7 years, Lordship. And she is aged about 65 years. And if we see the exhibit P8, Lordship, the specific allegation is against the accused number 2, Lordship. That is Nanad. It is dated 27th of April 2016. If Lordship may permit, then I read the question number 3. ये घटना कैसे घटी? जलाया गया, सास ने ननद ने जलाया, कमरे में बंद कर दिया था. पहले शादी को 8-10 साल हो गए. पैसा दहेज मांग रहे थे, भैया की शादी थी तो बोले पैसे 1 लाख रुपए मांग रहे थे.
थे वो ले आओ तो तो शादी में जाने देंगे। फिर हमने कई कहा कि पैसे तो बोले 40,000 50,000 ले आ। फिर शादी में 21 तारीख को नहीं गए। जई बात पर हमें कमरा में ले गए, मिट्टी का तेल सास ने डाला। फिर ननद सकी धुआं मतलब माचिस लगा दी। पति कभी साथ रहे नहीं, कभी नहीं रहे। 3 बच्चे हैं, 4 साल और 2 साल के बच्चे हैं। गांव वाले जलाने के बाद आए। पता तो सबे है पर कोई नहीं बोलते, डरते हैं। ननद का नाम लक्ष्मी है, जिसने मुझे जलाया है। ठीक है, क्यों सास के ऊपर हाथ हो रहा है, घासलेट डाला उसने। But at the relevant time, she was not there. And Mother-in-law was not there. yes, Lordship. Mother-in-law was not there. No, Lordship, and the कहाँ से मालूम पड़ेगा? Lordship, that can be corroborated from the DW2 Lordship. That is the child of the deceased Lord. And even the neighbor has also been examined, and she have deposited that the mother-in-law and the Nanad, that is the accused number 2, both were not there. Only the child of age is about 2 and 7 years was there. He was feeding to the child of 2 years. Lordship, the Lordship incident has been happened in regard to the going of the present deceased into the marriage of the brother Lordship. The son of the deceased. witness है ये तो। That has not. इसने तो दोनों को क्लीन चिट दे दी। आपकी बात में थोड़ा बहुत भी सच्चाई होती, उसने तो कह दिया दादी और बुआ दोनों नहीं थे वहां पर। और अटारी में जो है तो मिट्टी का तेल रखा हुआ था, माँ ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। Yes, Lordship. चाचा लोगों को बुलाने गांव चला गया था। Yes, sir. If we see the PW16 Lordship, if Lordship may permit, then I read from the deposition 16 PW16. तो हो चुका है ना डिस्कस। That has been discussed Lordship earlier also. Lordship, I have also filed an RTI application regarding the health status of the present, but those not have been received yet. The status की यहाँ तक बात है, we can direct the authorities to take care of your client. उसको जो best medical facilities उपलब्ध कराई जा सकती हैं, they can be asked to be given to her. But that unless you bring some material that her condition is such that she cannot continue to be lodged in jail, will not be able to help you. Yes, sir, but it has also been claimed that the dying declared is also tutored, but that at that same relevant time the कितनी देर बाद हुआ था? ऐसा कहाँ एविडेंस आई है कि dying declaration tutored है? It has come in the PW1 Lordship itself. क्या था PW1 में? Mary Lordship. ये साथ में थी क्या? जब dying declaration record हुआ तो she was present there, and one was present. Both mother and father were present there at itself, and they have directed decisions that you have to state against in the accused person. कह रही है चीफ में मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लड़की से हमारी अस्पताल में कोई बात नहीं हुई। 3-4 दिन बाद लड़की ग्वालियर अस्पताल में खत्म हो गई थी। लड़की की लाश ससुराल वालों ने प्राप्त किया, वो अंतिम। If Lordship may permit, then I read the para 2 last 4 line. Para 2 of PW1 Lordship. Last 6 line. मुझे जानकारी नहीं है कि मेरी पुत्री रामी देवी चलने से राम देवी ने उपरोक्त बात फोन पर बताई। यह कहना सही कि जिला चिकित्सालय छतरपुर में अपनी पुत्री रामा देवी की खराब स्थिति देखकर मुझे वह हरिराम क्रोध आ गया। यह कहना सही है कि क्रोध मैंने वह हरिराम ने पुत्री रामदेव को बोल दिया था कि आरोपी गण के विरुद्ध ही बयान देना है। यदि आरोपी गण के विरुद्ध बयान नहीं दे तो तुम फंस जाओगे। And same statement has been deposed by the father also. And the brother of the deceased has totally been declared hostile. Even if you want to help her, that's it. Marriage has already decided. रेगुलर बेंच पे लगा देते हैं, हाँ देखते हैं। तो रेगुलर बेंच पे लगा देते हैं, वहाँ देखिएगा। लॉर्डशिप में डायरेक्ट देखिएगा। This case for the regular bench. ये उनको hostile declaration आपको केस नहीं किया।
Lord, this is the third application, my lord. Suspension of sentence, my lord. I want to temporary suspension of sentence, my lord. Marriage of the appellant daughter, my lord, held on 30 मई को शादी है, my lord. 30 मई को शादी है. Yes, my lord. Lordship, it is not verified yet. Verification नहीं हुई. Verification करा लीजिए. Actually, Shakti Pandey submits that appellant's daughter is going to be married on 30th May. Shri Achyutendra Baghel prays for time to seek verification. That verification be called for. List on 29 May 2023. There is no legal evidence. मैंने पूरे to Z पढ़ लिया है, पर इसको रेगुलर बेंच में जाने दो क्योंकि में टाइम लगेगा. Narendra Hare prays for listing of this appeal before the regular bench. List before the regular bench. पर इसमें साहब 12th में जैसी खुले बाब उसमें लगा जैसा 12th जून में उस सप्ताह में नहीं लगेगा, फिर महीने भर नहीं लगेगा साहब. अच्छा, तो फिर 12th जून मत करिए, उसके अगले वाले हफ्ते में ले लीजिए. लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 19 जून 2023. Serial number 9. Manish Tiwari. In this objection is necessary. Objection is to be filed. And also notice to victim, Lordship. Ashish Kumar Tiwari issued notice to the victim that objections be filed by Shri Achyutendra Baghel. List thereafter in the week commencing 19 June 2023. Obliged. Serial number 10. Mukesh Kumar Pawar. Well, this petition has been referred against the order passed by the learned cat. Now, my lords, the order passed by the learned cat is challenged only to the extent whereby my stay has been vacated. My lords, despite recording the findings in my favor, despite my lords remitting the matter back to the authorities, and despite impliedly observing that the decision-making process is not proper. Territorial jurisdiction बताइएगा, ये जुल्म का आपके पक्ष का जुल्म क्या है? Yes, I'll just point out, sir. In the second round of litigation, this honorable court entertained the petition by overruling the territorial jurisdiction, and also there is a direct Supreme Court judgment on the point, my lords. My lords, this is on the point, my lords. If the tribunal is situated within the territory of this honorable court, my lords, in that case, my lords, the jurisdiction is before this honorable court itself. Para 16 would be relevant. By referring to a 1997 judgment, my lords, it has answered this question. Para 16 would be relevant, and the relevant portion would be, my lords, may come to page number 14, the last paragraph. The jurisdiction conferred upon the High Courts under 226, 227, and upon the Supreme Court under Article 32 of the Constitution is part of the inviolable basic structure of our Constitution. While this jurisdiction can't be ousted, other courts and tribunals may perform a supplementary role in discharging the powers conferred by Articles 226, 227, and 32 of the Constitution. Tribunals created under Article 323A and Article 323B of the Constitution are possessed of the competence to test constitutional validity of statutory provisions and rules. All decisions of these tribunals will, however, be subject to scrutiny before a division bench of the High Court. Parallel about it, वो L चंद्र कुमार में already Yes. हो चुका है. Issue दूसरा है, जब एक ट्राइब्यूनल का 2 हाई कोर्ट में जुरिस्डिक्शन फॉल करता हो, लाइक कैट जबलपुर बेंच, it has circuit sitting in Chhattisgarh, it has circuit sitting at Gwalior and Indore. Then how to determine the jurisdiction? उसके ऊपर क्या material है? On that, even before the CAD, when I filed the application, my lords, there was no territorial jurisdiction issue, and it was entertained. तो territorial jurisdiction इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैट में तो कैट कॉमन है ना, कॉमन है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के Yes, लिए. and this is on the point once the CAD Jabalpur has ordered. So therefore, this honorable court would have jurisdiction. And the first round, so this case has a history. Second round, honorable court overruled those objections. Where is that order? My lords may come to P3. Page, my lords, would come to, my lords, page 42. Starting from page 42, the relevant portion would be 54. The very first paragraph, my lords, would see. Yes. Page 54, offer of objection with regard to territorial jurisdiction in the respective petition is overruled on the basis of this judgment. Yes, Mr. Verma.
My lord, I don't have any objection to that, my lord. If my lord want to hear, my lord, it will actually. Want to hear means? My lord, it will actually lie before this honorable court only, my lord. Not before the Chhattisgarh High Court. My lord, because the bench who has the matter, my lord, is the Jabalpur bench, not the Bilaspur bench of the tribunal. ठीक है, आपका नोट कर लेते हैं. बताइए, merits पे बताइए. My lords, on merits, may I humbly submit. Now, this case has a history. Now, my lords, may I just take to the brief background of the case. My lords, we are aggrieved by P1 is the transfer order. This is dated 16/9/2022, where, my lords, we have been transferred. Petitioner has been transferred. Yes. Challenging this P1, my lords, we approached the learned tribunal, my lords, in the first round. 24/2/2023 is the first order by which learned cat dismissed all our applications. P2 is that order. Yes. Challenging P2, my lords, we approached this honorable court in the second round. Right. My lords, may come to this P3, my lords. This is a very relevant judgment order passed by in favor of other petitioner. Page number 52-4 would be relevant. And starting, my lords, I would draw your lordship's attention directly from page 55. Yes. My lords, may come to, my lords, 6th paragraph. I'll read out for your lordships. On hearing learned counsels and without going into the merits of the case, we are of the considered view that appropriate interference are required to be made in all these matters. So far as the grievances of each of the petitioner are concerned, it is admitted that none of the grievances have been brought to the notice of the concerned KVS, that each of the petitioners appear to have their own reasons in order to assail the orders of transfer. Therefore, we are of the view that it will be only just and appropriate to permit the petitioners to make their representations to the respondents KVS, calling out the reasons as to why transfer order is required to be withdrawn. It is only when the petitioners make a request to the respondents stating their grievances, the respondents KVS would then consider the same on merits and also in terms of the transfer guidelines. However, it is contended, so far as the guideline number 6 is concerned, same appears to have been stated by the Kendriya Vidyalaya Sangathan. Even then, we are of the view every order of transfer requires to be fairly considered. It is ultimately fairness in action which the court will be looking into. Therefore, with the consent of the learned counsel for the parties, we are of the considered view that the petitioners may make a representation individually to the respondents KVS on or before 6/3/2023 that they are entitled to take all the grounds in support of their case. The respondents should consider the representation individually and pass appropriate orders thereon on or before 20/3/2023, that they shall also take into account the fresh manpower that is likely to be employed by them while considering case of each of the petitioners. Furthermore, even those petitioners who have already reported to the place of posting would also be permitted to make a representation to this effect. In case the representation has already been furnished, the same does not prevent the petitioners filing a fresh representation also. The challenge to transfer guidelines will be considered in an appropriate proceeding. Hence, all these petitions are accordingly disposed of. The interim order granted by the tribunal shall remain in operation till 10/4/2023. The respondent shall not be influenced by any of the observations made by the tribunal. Now, admittedly, the first round got dismissed on merits. 5 things which comes out from the Honorable High Court's order is, my lords, the very first thing is that interference was warranted, was made by the Honorable High Court in the second round. Secondly, my lords, individual cases are. Now, what is the ground? My ground is that once the learned tribunal in their paragraph 2017 has held that the decision-making process is not proper and the matter is remitted back to the authorities. बात कब decide किया? इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मतलब they have decided by P5. There was a specific finding by the tribunal that it is a cyclo-style order. Decision-making process is not proper. P5, my lords, may come to. This is, my lords, page number 62. Now, this order would not take care of, my lords, firstly, 2 things I'd like to point out. पहले order पढ़ेंगे. My lords. 29(3). Right from the beginning, I'll read out, my lords. Ms. Neena Chaudhary, PRT, has been transferred from KVS Durg to KVS Kavarda on administrative ground by transfer order dated 16/9/2022 for the purpose of rationalization and redistribution of existing teaching staff in order to ensure that at least 50% of regular teaching staff are available in all KVS across the country. Whereas the above transfers are effected for reasons that due to disruption in normal schooling for past 2 years, owing to the pandemic situation, there has been a significant learning loss amongst the students due to online blended mode of teaching. According to the Mental Health and Wellbeing of School Students 2022 report published by NCERT in the chapter relating to KVS, it has been stated that during COVID-19, as classes were taking place in online mode,
54% of the students who participated in the survey reported facing difficulties in understanding and learning of content through online mode. Hence, the need was felt to address on priority the challenges being faced by the students for the past 2 years due to pandemic through administrative means. The rationalization of teachers and redistribution of the existing teaching staff have been effected to address the above core challenges after the pandemic, so that at least 50% of the regular teaching staff, inclusive of all cadres, are available on all KVS. Whereas KVS has identified around 237 KVs having less than 50% of regular teaching staff on its roll, and about 481 KVs having 80% or more regular teaching staff on its roll in all over India on the basis of available vacancy. As per station seniority, all India cadre subject rise who has the longest stay in a station as per date of joining at the station was taken as the criteria for transfer. Most of the teachers who have been transferred have had a stay in a particular station for more than 10 years. Out of the total teaching staffs in position, only 1,455 transfers have been effected, which is less than 4% of the total teaching strength in position. Agreed with the above, Mr. Neena Chaudhary, PRT, filed OA before the Honorable Tribunal, Jabalpur bench. The Honorable Tribunal has passed order dated 24/2/2023 and dismissed the OA wide common order, which is reproduced below. This is the order passed by the CAT. Whereas agreed. Come to page 63. 63, my lords. Accordingly, the applicant has submitted representation dated 6/3/2023 requesting for cancellation, modification of his transfer order. Whereas on examination of the representation of the applicant and facts available in KVS, it is observed that Ms. Neena Chaudhary, PRT KV Durg, had been working at the same station with effect from 9/9/2004, that is more than 18 years, and Vidyalaya was identified as KV having 80% or more regular teaching staff at that time. Accordingly, she has been transferred from KV Durg to KV Kavarda, teacher strength having less than 50% of regular teaching staff on its roll. While effecting transfers, the organizational interest, which is primarily student-centric, remains the uppermost consideration. Further administrative transfers are effected for the purpose of redistribution of teaching staff in accordance with provisions regarding administrative transfers. That किस ground पर आप इसको challenge? No, was mainly on two grounds. Two observations, very important, pointed out by the Honorable High Court was, my lords, that there has to be fresh manpower which is likely to be employed by the KVS is to be taken into consideration, my lords. That's the first thing. What is the material that how much manpower? My lords, material is annexure P6 along with the OA also, along with the petition also I filed. My lords, this is the notification, my lords, may come to P6. This is the notification, my lords. Advertising various posts, my lords. Relevant page would be, my lords, 64. Yes. My lords would see subject. Filling up of the posts of principal, vice principal, section officer, finance officer, PGTs, CGTs. Here we are all, my lords, PRTs, headmaster through limited departmental competitive examination. Now, my lords, I further filed documents to show that it is almost at the stage of culmination, my lords. Page 68, my lords would find. 68, yes. This would show, my lords, tentative schedule of the computer-based test for all the posts through direct recruitment against advertisement number 15 and 16. PRT का recruitment का test कब है? PRT का, my lords, would see 21 और 28 फरवरी को हो गया. Yes. And क्या हुआ? उसके बाद, my lords, as per my information, it is almost at the stage of culmination. During this vacation, my lords, they will be in a position, my lords, to accommodate all those postings. Around, my lords, more than 2,000 postings have been posts have been, my lords, advertised. कहाँ है वो 2000 पोस्ट कहाँ से मालूम पड़ेगा? My lords, this gets clear from, my lords, advertisement 15, my lords, में 16, 66 page. 66, yes. Direct recruitment of primary teacher in KVS. The my lords may come to the middle of the page. Primary teacher, unreserved categories 2599, and my lords would see total 6414. My lords. Yes. So my submission is. कब तक हो जाएगा ये recruitment पूरा? My lord, these direct recruitment of teachers, my lord, has been done from limited departmental competitive examination. Right. Now, my lord, these teachers, my lord, the interview process will end by 30th of May 2023, my lord. Now, my lord, these teachers are kept in backup for the teachers, my lord, who are
completing their tenure in the northeast areas and in the harsh. कहाँ से मालूम पड़ेगा? My lord, that statement I have made before the tribunal, my lord. The tribunal. There must be some basis for that. Seek written instructions that these teachers are to be deployed only in the northeast area or to be deployed only as a backup. File affidavit of the head of the Kendriya Vidyalaya Sangathan. But the deputy commissioner, the deputy commissioner will file affidavit. Not deputy commissioner. Let the head commissioner file affidavit that Kendriya Vidyalaya Sangathan, which is going to recruit 6414 primary teachers. You have two options. My lord. Either you say that once this recruitment is completed, then you will examine the merits of their redeployment and if they can be redeployed to their parent place, because then that aspect of shortfall will be over. Either you do that, then we will direct you to consider that and pass orders on merits. Or you have an option that you file affidavit of the commissioner saying that these recruitments are to be made exclusively for northeast and backup posts. My lord, actually the vacancies, my lord, which are unfilled. My lord, in fact, in 471 schools, my lord, there is a deficiency of staff of more than 50%. पढ़ लिया उन्होंने पढ़ दिया उसके बाद आपने 1400 कुछ लोगों को ट्रांसफर किया 1455 ट्रांसफर किया है सिर्फ 50% का अकोमोडेट करने के लिए 50% तो कम से कम रहा है नए जो फैकल्टी आ जाएगी जी उसके बाद में आप नई फैकल्टी को वहां पोस्ट कर सकते हैं ऐसा कंसीडर करेंगे या तो ऐसा बताइए सर मैं इस बारे में एफिडेविट फाइल कर देता हूं सर ठीक है लिखिएगा श्री उत्कर्ष अग्रवाल लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर श्री उत्कर्ष मनीष वर्मा लर्नेड काउंसिल फॉर द respondent Kendriya Vidyalaya Sangathan. Respondent number 1, 2 and 3. Next. Shri, though office has raised an objection as to territorial jurisdiction of the court, but reliance is placed by Shri Utkarsh Agrawal to the decision of Supreme Court in Union of India versus Alpan Bandyopadhyay 2022 live law within bracket SC bracket close 12, wherein reading para 16 of the said judgment is pointed out that High Court within whose territorial jurisdiction tribunal functions, tribunal as created under Article 323A and Article 323B functions, then judgments of said orders and judgments of said tribunal shall be subject to scrutiny before a division bench of the High Court within whose jurisdiction the concerned tribunal falls. Full stop. Shri Manish Verma commits that he has no objection in regard to territorial jurisdiction. He emphatically submits that, in fact, territorial jurisdiction will be of the High Court of Madhya Pradesh at principal seat because orders under challenge were passed by the Central Administrative Tribunal Jabalpur bench Jabalpur. Next paragraph. Looking to this statement made by Shri Manish Verma, office objection is overruled. Next. Office objection is overruled as it was overruled earlier also by a coordinate division bench of this court wide order dated 3/3/2023. 3/3/2023, my lord. 3rd March 23. Next. Shri Utkarsh Agrawal submits that in the order annexure P5 dated 29/3/23, while deciding the representation of the petitioner, it is mentioned that there was shortfall of 1455 teachers across the country, and therefore keeping institutional interest with a view to rationalize and provide 50% regular teaching staff to all the KVs, whereas persons who have been transferred were from 481 KVs having 80% or more regular teaching staff on its roll have been transferred to around 237 KVs which have been identified having less than 50% of regular teaching staff, was an exigency that may have existed at that relevant point of time. Full stop.
Reading next paragraph. Reading annexure A6 dated 2/11/22, it is submitted that notification was issued for filling up various posts. Full stop. Reading from page 66 of this. Reading from advertisement, page 66. Advertisement number 16/22 for direct recruitment of primary teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan. It is pointed out that 6414 primary teachers are going to be recruited. Full stop. Shri Manish Verma, appearing for the respondents, admits that this recruitment process will be complete by 30th May 2023. Not likely to be completed. Is likely to be completed by 30th May 2023. Next where. When Shri Manish Verma was given an option that the authorities of the Sangathan be given a liberty to examine redeployment of transferred teachers after infusion of fresh faculty in terms of advertisement number 16/22, Shri Manish Verma submits that he has made a statement before the Central Administrative Tribunal that these faculties will be used as backup faculty to be deployed in Northeast and hard station. Ji? And hard station postings. And hard station postings. Full stop. But, however, there is no material available on record, and this cannot be subject to. Please wait. Please don't interfere. And this cannot be deciphered from the advertisement number 16/22. Full stop. Let Commissioner Kendriya Vidyalaya Sangathan file a personal affidavit that these newly recruited 6414 primary teachers will not be deployed to schools where deficiency of faculty exists, which became the cause for transfer, but are meant exclusively for deployment in hard stations and Northeast. But subject to transfer guidelines. No, please don't. Let affidavit be filed by the Commissioner within 7 days. List this case. 10 days. Within 10 days, list this case on 5 June 2023. Of the list. In the meantime, we may be allowed to continue because अभी वेकेशन चल रही है. नहीं, वेकेशन के 5 जून को the purpose would become infructuous. Maloj, may appreciate. अभी वेकेशन चल रही है, कोई purpose infructuous. नहीं, we have been relieved, Maloj. We may be. Let them file their affidavit. Maloj, what my summary with. I'm sorry, I'll not show any indulgence unless that affidavit is filed. Status quo may be maintained, Maloj, at least in order to, Maloj. देखिएगा, Shri Utkarsh Agrawal presses for interim relief, but at this stage, when petitioner already stood relieved, no interim relief can be granted without obtaining affidavit of the commissioner. Full stop. Commissioner will also be free to mention that if they propose to post these newly recruited persons to the stations where there existed deficiency of faculty, and the Commissioner is open and the authorities are open to reconsider the case of the petitioners, then that may also be brought on record by filing affidavit of the Commissioner of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Can I pray for certified copy of certified copy? Can I then pray for no coercive steps at least? Nothing. Sorry, you are pressing something which is not possible. Can it be on 9th? Huh? Can it be on 9th? No, it will be on 5th only. Chali. Serial number? May I just point out similar item numbers? 10, 11, 43, 44, 40. आपका वही है क्या? मतलब they are identical matters. कब से कहाँ से कहाँ तक 10 से 10 से लेकर के 35 तक हैं सर. 10 से 35 तक सेम ऑर्डर कर दीजिएगा. जी सर, मैं लिस्ट दे देता हूँ. मैं लिस्ट दे देता हूँ. ये लिस्ट दे देते हैं आइडेंटिकल के. 10 से लेकर के 35 तक और फिर 43 से लेकर के 65 तक. एक मिनट रुकिएगा प्लीज. 10 से 35 बताया ना. 10 से 35 जी. और फिर 43 से लेकर के 66 तक. 43 से 66 कर दीजिए. जी सर. पर 84 से लेके 91 तक. 84 से 91 कर दीजिए.
I am obliged. Malord, in my case, I have not नाम been relieved. वकीलों के सबके नाम डाल दीजिएगा प्रोसेस से देख के। आप एक नाम लिख के दे दीजिएगा वकीलों को, वो सब इकट्ठे एक ही ऑर्डर में आ जाएंगे। Malord, one humble request in serial number 14, Lordship. I have not been relieved till date, Lordship. That's why I'm bringing If it. you are not relieved, then take Then status quo may kindly be granted, Your Lordship. nothing. Without hearing them, I'll not grant any. I'll not do any. Order of no further action will serve the. No, sorry. But what is, although there is a vacations going on, my lord, but ex party they are relieving on the basis of the order of the CAT, my lord. Yes, ma'am. I'm sorry. No indulgence can be shown without hearing them. Chaliye. This is third round of litigation. But, my lord, the Honorable High Court only has granted interim relief stating that the representation should be decided. They have not decided the representation properly, and that's why they are. ठीक है. Interim continued till the passing pronouncement of the judgment, my lords. The order under which is challenged before your lordship, my lord, the matter has been remitted back to the authority. सुनेंगे. Interim relief which is granted. 5 जून को सुनेंगे. 5 जून को सुनेंगे. चलिए. Order number 36. Can it be on 9th, my lords? Joint request of all the parties. Why Can it be on 9th order? क्या आपको एक और तो इतनी अर्जेंसी है कि जो है आज ही इंटरम रिलीफ नहीं मिलेगा तो पिटीशन इन्फेक्ट हो जाएगी. सर 5 को है नहीं सर, काफी 9 को कर दें. ठीक है, तो 5 को एडजॉर्न करा लीजिएगा 9 के लिए. चलिए करा लीजिएगा. I am obliged. My lord, may I make a humble submission, Your Lordship? Your Lordship, this matter pertains to the guest faculty, Your Lordship, regarding the no. Order number 36. My lord, in this matter, Your Lordship, the petitioners are working as guest faculty, Your Lordship. In the fresh recruitment, Your Lordship, they have not been awarded marks of the experience, Your Lordship, which has been awarded, Your Lordship. हाँ मालूम पड़ेगा कि आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं दिए हैं. My lord, there was an advertisement, Your Lordship. Annexure? Annexure P2, Your Lordship. P2. Page number 12. And there, in that advertisement, Your Lordship, she was appointed as guest faculty, Your Lordship. Thereafter, an advertisement, a subsequent advertisement was issued, Your Lordship, at page number 13, Your Lordship. My lord, the petitioner was appointed as guest faculty, Your Lordship. My lord, her appointment letter is at P3 annexure P3. नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं दिए गए. My lord, वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? My lord, इसमें annexure P8 P7 I'm sorry, Your Lordship. Annexure P7 at page number 31. Yes. उसमें Your Lordship first counseling हुई थी. इसमें petitioner was not selected, Your Lordship, because the experience marks were not added, Your Lordship. कॉलम का है एक्सपीरियंस का बताइएगा तो. एक्सपीरियंस My lord, ये लास्ट में एक्सपीरियंस वेटेज है तो. My lord, आपका शुभ नाम कहाँ पर है? My lord, her name is not in the first counseling, Your Lordship. ठीक है, चलिएगा फिर. Your Lordship, thereafter, Your Lordship, the petitioners has submitted their representation, Your Lordship. Which is at page number 50, Your Lordship, annexure P12, Your Lordship. 50. Yes, Your Lordship. Yes. Page number 50. They have made the submissions, Your Lordship, before responding number 2, Your Lordship. That as per the policy, Your Lordship, and in policy 5.4, clause 5.4, yes, they have not been awarded the. कब से कार्यरत थे आप? मतलब कब से कार्यरत थे? मतलब they have been working since 2021, Your Lordship. कहाँ से मालूम पड़ेगा? मतलब annexure P3 at page number 14, Your Lordship. There was the appointment order, Your Lordship. Malord, the petitioner is a postgraduate in IT subjects and she is pursuing PhD. We are not concerned with it. The only grievance is that they have not been given marks for experience. Malord. Yes, Mr. My lord, may kindly see annexure P8, page number 39. Yes. My lord, it will make the entire picture clear. Initially, may I read it, my lord? Please.
हाँ, इसमें लिखा है ये DIT से डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन से जारी हुआ है। महत्वपूर्ण सूचना, अतिथि व्याख्याता के द्वितीय चरण आवंटन के संबंध में 2023 प्रदेश के शासकीय स्वशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से अतिथि व्याख्याता नियुक्त करने हेतु चयन सूची संस्था एवं संकायवार 23 फरवरी 2023 को जारी की गई। इच्छुक आवेदकों द्वारा आवंटन के आधार पर संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रथम चरण आवंटन सूची जारी किए जाने के उपरांत राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा विश्वविद्यालय की घटक संस्था UIT RGPV भोपाल एवं शिवपुरी में रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शासन के निर्णय अनुसार अतिथि व्याख्याताओं के द्वितीय चरण के आवंटन की प्रक्रिया में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की घटक संस्थाओं की आवश्यकताओं को भी शामिल किया जा रहा है। उक्त प्रस्ताव में समस्त पात्र आवेदकों को जिन्होंने प्रथम चरण के आवंटन के उपरांत संस्था में उपस्थिति दर्ज की है को शामिल करते हुए अपनी संस्था प्राथमिकता चयन करने का अवसर। इसमें वेटेज का बात कहां से आ रही है? इनिशियली जो एडवर्टीजमेंट है दैट इज नेक्स्ट P6, जहां पर राजीव गांधी RGPV रिस्पोंडेंट नंबर 3 और उसका इंस्टीट्यूट रिस्पोंडेंट नंबर 4 के लिए गेस्ट फैकल्टी का चयन नहीं होना था। बाद में इनको इंक्लूड किया गया है। तो क्या होगा, तो क्या आप उनको इनका एक्सपीरियंस देंगे? एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस केवल जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी है उनको देने का अनेक्शर P6 में प्रावधान था। P6 एट पेज नंबर 24। मध्य प्रदेश शासन तकनीकी सीधे उस पर आइए। हाँ, इसी में लिखा है। एक्सपीरियंस का कहाँ लिखा है, किस पेज पे लिखा है? हाँ, एक्सपीरियंस का इसमें लिखा है कि सिर्फ शासकीय कॉलेज के, हाँ, उन्हीं को भरने के लिए था। तो ये शिक्षण बताइए कि सिर्फ उन्हीं को अतिथि शिक्षक का वेटेज मिलेगा अनुभव का, बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? आप पढ़ के बता दीजिए। और इसमें ये लिखा हुआ है आपका page, actually it is based on the policy dated 27/1/22 which is annexure P5, page number 22 में kindly be seen, page number 22 clause 5.4। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पूर्व से कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को अधिकतम 5 वर्षों का 20 अंकों का अधिभार अनुभव के आधार पर निम्न अनुसार प्रदान किया जाएगा। कहाँ लिखा है? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को मिलेगा, को नहीं मिलेगा, कहाँ लिखा है? हाँ, ये इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इसमें शुरू में ही माइलॉर्ड में कह लीजिए P5 पेज नंबर 19। इसमें लिखा शासन राज्य शासन एतद द्वारा मंत्री परिषद के आदेश स्वयंसो के अनुसार विभाग के अधीनस्थ स्वशासी इंजीनियरिंग शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ऐसा तो नहीं लिखा है कि सिर्फ शासन के ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। नहीं, और दूसरा, दिस इज माय फर्स्ट सबमिशन माय लॉर्ड, माय सेकंड सबमिशन, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ही अपने एक्सपीरियंस का मेंशन नहीं किया है। इनके एप्लीकेशन में काइंडली बी सीन पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 में रेलेवेंट पेज नेक्स्ट पेज है 41, जहां पर ऊपर ही लेफ्ट साइड में लिखा है एक्सपीरियंस डिटेल, नो एक्सपीरियंस डिटेल एग्जिस्ट। बताइए ना मिस्टर तिवारी, आपने नो एक्सपीरियंस डिटेल क्यों भर दिया? And then how you expect them to grant you marks? आपने क्यों नहीं डिटेल्स डाले इसमें एक्सपीरियंस के? आप ही का आवेदन है ना? My lord, it is an application only, your lordship. प्रत्यंशा वर्मा, my lord. हाँ, बताइए। Then how you expect the authorities to grant you experience marks for the experience? My lord. देखिएगा। My lord, may I seek instructions, my lord? नहीं, क्या instructions है? My lord, may I seek सामने है। My lord, may I seek instructions, my lord? Why she has not failed, my lord? We don't know. My lord. As far as material which is available before us is My lord, concerned, my lord. he has not filled the details. My lord, and once you fail to fill the details, you are not expected to be given any marks. My lord. हम तो आपके behalf पे इनसे पूछ ही रहे थे। My lord, कुछ लिखिएगा। My lord, but she has what can be done? श्री, शुभ नाम बोलिए आपका? Anshul Tiwari. Anshul Tiwari, learned counsel for the petitioner. Petitioner's grievance is that petitioner was working as a guest faculty at University Institute of Technology, Shivpuri.
while making fresh round of recruitment for guest faculties, she has not been given any marks for experience, whereas as per Annexure P5, which is order issued by the by the Department of Technical Education, Skill Development and Employment on 27/1/22, as per clause 5.4, maximum 20 marks spread over 5 years were to be granted towards the experience in terms of the stipulations contained in clause 5.4 of said order. Next paragraph. Shri Brahmdutt Singh firstly submits that the learned Deputy Government Advocate General firstly submits that marks for experience were to be granted only for the experience gained in government colleges and not for private colleges. But when he was asked to read Annexure P5 dated 27/1/2022, he is not able to point out that experience marks were to be granted only to the persons who had worked as guest faculty in government, engineering or polytechnic colleges and not in autonomous or private colleges. Therefore, this ground raised by Shri Brahmdutt Singh, learned Deputy Advocate General, is not made out. However, he points out that by filling the application, applicant as contained in Annexure P9, applicant had left the column of experience detail saying that no experience detail exists, full stop. Thus, once petitioner herself had failed to give details of the experience, she cannot be expected to be given marks for the experience in terms of the stipulations contained in order Annexure P5. Therefore, when examined from this point of view, that petitioner herself had not given details of the experience, then authorities cannot be said to have faulted in not granting any marks for experience. Petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. Serial number 37, case not received. Serial number 38. Today. I'm appearing on behalf of Mr. Malod Shivajid Haider Malod. He is not available today. May I say, here, Malot, in this particular connection, these are second round of litigation in connection with the execution of the order passed by the collector under Section 14 of Surface Act. So, Malot, for taking the possession of the 70% of the property, the mortgage property, initially one WP was filed. Lawyer भी है next week रख देते हैं. Next week आपकी urgency हम समझ रहे हैं. Next week रख देते हैं. Yes, ma'am. It is Shri Abhijit Chakravarti Thakur, learned counsel for the petitioner. Shri Utkarsh Agrawal submits that arguing counsel Shri Mohammad Wajid Haider is not keeping good health. Malod, he is not available today. No, is good health. He is not available today and prays for short adjournment. Full stop. Shri Thakur submits that there is urgency in the matter. Full stop. Taking this fact into consideration, list this case on 29 June 2023. 29 मई 2023. 1/9/22 को एडमिट हो गई थी. 1/9/22 को हुई होगी. जी. Litigation लड़ाई. With permission, may I humbly make, in that case, Manoj, can it be after the affidavit, my entry may be considered? It may be observed, Manoj. I'll pray for a week's time, Manoj. 39. Shri Manish Tiwari. Manish Tiwari prays for time to argue this case. On his request, case is adjourned list after ensuing summer vacation. Serial number 40. Serial number 40 is Patel Patel. My lord, one IE filed, my lord, for the amendment in petition, my lord. My lord, matter is related, petitioner are working as a guest faculty. 6810 of 2023, an application seeking amendment in the writ petition. Same is not opposed by Shri Brahmdutt Singh, learned Deputy Advocate General,
accordingly it is allowed. Let necessary correction be carried out within 7 days. This after ensuing summer vacation. My lord, my prayer is that, my lord, I may be permitted to incorporate the amendment within a 3 working day, my lord, and matter will be listed on Thursday, my lord, because the petitioner are working as a guest faculty, my lord, and with, my lord, contrary to the judgment passed by this honorable court, my lord, the respondent advertised the post, my lord. ठीक है, बताइएगा फिर पहले से लेके आना चाहिए था. चलिए. My lord, case is squarely covered by my lord order itself, my lord. My humble prayer, my lord. Thursday, my lord, sir. List on 5th June कर दीजिएगा. Oblige, lord. Serial number 41. Serial number 41. None. I have to correspond 5 and 6. Shri Khare for respond number 5 and 6. Shri Ramdas Singh for respond number 1 and 2. None for J. As nobody is appearing for the appealant and default has been pointed out by the registry, let default be cured within 4 weeks. List this appeal thereafter. Serial number 42. Serial number 42. Mr. Prakash Mitra. See, none adjourn कर दीजिए list after. 41. 41 में तो आप आए नहीं, बढ़ गया. सर मैं जस्ट बढ़ गया. सर मैं बिल्कुल तो डिफॉल्ट क्योर कर लीजिए. नहीं सर, वो डिफॉल्ट इग्नोरिंग ऑफ डिफॉल्ट उनको पार्टी नहीं बनाया था ट्रायल कोर्ट में एंड रिट कोर्ट में, इसलिए हमने एप्लीकेशन लगा के रखी है. बढ़ गया तो माय लॉर्ड जस्ट अब भी मैं बस एंट्री हुआ हूं सर. सर इसको बहुत टाइम से आना चाहिए. माय लॉर्ड आई वाज कोटिंग, आई वाज एंटर्ड जस्ट अब 42 ही आया सर. चलिए कोई बात. सर पास ओवर में ले लें सर उसको. There's a lot of work to be done. My lord, simple sa matter pertaining to demarcation of a property, your lordship. They are not demarking my property and they started demarcation of the other property, your lordship. सुनेंगे उसको. चलिए. सर उसको पास ओवर में ले. Serial number 67 श्री भूपेश तिवारी. None for the petitioner. Shri Amit Seth, London Deputy Advocate General for State. As nobody is appearing for the क्या मैटर क्या है ये? सर एक PIL इनका कहना है कि जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट है जिसको माइनिंग का ठेका मिला है सैड का, वो थोड़ा मैकेनिकल मींस से नदियों से रेत निकाला. इसमें कलेक्टर जांच कराए, इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. मतलब इसमें जो रूल्स हैं 2019 के, उसके हिसाब से सिर्फ मैकेनिकल मीन से जो बाहर है नर्मदा नदी में, ये कटनी का है, वहाँ नर्मदा नदी नहीं है. अच्छा. नोटिस PIL क्या करना है, आने दीजिए उनको. नन करके so that joint list after ensuing summer vacation. Serial number 68 श्री राम पल वर्मा. Same order, none. Cases adjourned list after ensuing summer vacation. Serial number 69 Mr. Prakash Mishra. Kindly may be taken. I'm just coming from. Shri Satya Prakash Mishra submits that he is coming from outside and is not prepared with the matter. On his request, cases adjourned list after ensuing summer vacation. Next week, man. Serial number 70. Serial number 70 श्री विजय कुमार यादव. क्रिमिनल ट्रायल का अक्यूज्ड है, उसने पिटीशन लगाई है जी. क्रिमिनल ट्रायल चल रही है, उसका अक्यूज्ड है, उसकी पिटीशन लगी हुई है और प्रेयर जो है वो सीम्स की कॉशमेंट चाह रहा है वो, लेकिन कॉशमेंट चाह रहा है, ट्रायल का कॉशमेंट चाह रहा है और ये बोल रहा है कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 को अक्यूज बनाया जाए. प्रेयर देखने से पेज नंबर 8 में आएंगे ही नहीं तो क्या कर सकते हैं. None for the commissioner, Shri Rohit Jain, London Government Advocate for State. Shri Rohit Jain has serious objection as to the maintainability of this petition, but looking to the fact that nobody is appearing for the petitioner,
case is adjourned list after ensuing summer vacation. Serial number 71, Srimati Shubha Gautam. बताइएगा। हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए निवेदन कर रहा है हमारा। किस ग्राउंड में अतिथि शिक्षक जो पहले निकला था एडवर्टाइजमेंट मतलब काइंडली सी एनेक्स P3 मतलब 9/12/22 का, उसमें था कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य के संबंध में समस्त दस्तावेज सत्यापन अधिकारियों और आवेदकों को स्पष्ट किया जाता है कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र में शैक्षणिक सत्र 22-23 में माह नवंबर 23 तक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाए। उस समय मालूम हमारा नवंबर तक का अनुभव प्रमाण पत्र अनुभव नहीं था मालूम। उसके बाद मालूम दूसरा एडवर्टाइजमेंट निकला मालूम काइंडली सी एनेक्स P6 मालूम पेज नंबर 20 2/5/2023 का मालूम। एक सेकंड समझ में नहीं आया हमको। आपके आयुक्त महोदय नवंबर 23 तक का, तो क्या आने वाले समय के पहले का भी बाद का कैसे हो सकता है? सर वो तो लग रहा है टाइपोग्राफिकल एरर है। हाँ, वो दूसरे पैरा में से क्लियर हो रहा है। विदाउट वेरीफाइंग द डेट्स, हाउ देयर कैन बी अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर अ लेटर डेट? ये दूसरे नीचे से क्लियर हो जाता है। सब्सिक्वेंट पैरा समस्त संकुल प्राचार्यों की विद्यालय में कार्य के माह नवंबर 22 तक के मानदेय देयक 12 दिसंबर तक पोर्टल पे जनरेट करें। मतलब ये है कि दे शुड हैव बीन इशूड सर्टिफिकेट अप टू नवंबर 22। जी वही है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। कमिश्नर साहब ने कैसे साइन कर दिया भाई? हो सकता है सब्सिक्वेंटली क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया, बट नेक्स्ट पैरा से तो वो क्लियर हो रहा है कि नवंबर 22 ही इंटेंडमेंट था। लास्ट में लिखा है 30/11 तक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करें। वो इनको जारी हो गया है, नेक्स्ट है 22। मतलब वैसे तो फरवरी से अप्रैल तक का मान्य होता है, लेकिन इन्होंने नवंबर तक का कर दिया। नवंबर 22 तक का माना, ठीक है, आपके पास है वो? जी माला। उसके बाद हमारा है मालट P4 में हमने नवंबर तक का हमारा मान्य माला, ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने नया माला एडवर्टाइजमेंट निकाला काइंडली सी एनेक्स P5 माला पेज नंबर 20 2/5/2023 का। उसमें हमारा ये निवेदन था कि उसमें इन्होंने माना है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु 26/11/22 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता 2020 में अर्हता प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 200 दिवस एवं 3 शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य किया है। तो चेंजिंग दी कंडीशंस अगेन एंड अगेन? नो माय लॉर्ड, पहले आपने कहा कि नवंबर तक का करें, ये अभी भी वही है सर। नहीं वही नहीं है, आपके कमिश्नर बदल गए तो आपने क्वालिफिकेशन बदल दी। ये वो जो था वो सर पहले दिस सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये पहला टीचर रिलेटेड टेस्ट हुआ, उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑन द बेस ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद ये दूसरा दोबारा हम काउंसलिंग कर रहे हैं टू सेकंड राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट। आपने पहले ये कंडीशन प्रिस्क्राइब करी कि जिनके पास में नवंबर 22 तक का अनुभव प्रमाण पत्र है उसको मान्य किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप एक नई कंडीशन ले आए, न्यूनतम 200 दिवस एवं 3 शैक्षणिक सत्र में अध्यापन का कार्य किया है। नहीं, ये जो P3 है ये केवल एक सर्कुलर है टू ऑल द प्रिंसिपल्स टू इशू द सर्टिफिकेट पॉजिटिवली बाय दिसंबर। ये रूल बुक नहीं है, रूल बुक इन्होंने फाइल नहीं करी है। रूल बुक में भी यही पोजीशन है जो कि अनेक्शर P5 में है। क्या नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया है। रूल बुक कौन सी है? मतलब ये सेकंड उसका है, पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में इसी तरह का जारी हुआ था। मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ। You produce it. जी जी। We have not changed. It is not the case of the petitioner as well. We have changed the rules. The petitioner only beseeches, my lord, में representation उनका में भी seen P6 पेज नंबर 28। ये कह रहे हैं कि 30 अप्रैल 2023 तक का एक्सपीरियंस काउंट करना चाहिए है। कहाँ कह रहे हैं? ये P6 पेज नंबर 28 में लास्ट पैरा। मैं ये चाहता हूं कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 23 तक के मान्य किए जाएं।
हमें भी द्वितीय काउंसलिंग में अतिथि श्रेणी के साथ शामिल करने की कृपा करें। किस नियम के अंतर्गत आप चाहते हैं? मॉडल ये जो इन्होंने दूसरी काउंसलिंग निकाली है, दूसरी काउंसलिंग में हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में इन्होंने हमको अपियर नहीं होने दिया, क्योंकि कहा कि 23 नवंबर तक का होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। अब हम कह रहे हैं जो द्वितीय काउंसलिंग निकाली मतलब वो काउंसलिंग में अपियर। आपका ये कहना तो गलत है कि भाग नहीं लेने दिया गया। आपके पास तो 30 नवंबर तक का अनुभव प्रमाण पत्र था। फिर अब आपके मुताबिक कैसे चेंज हो जाएगा? अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ? नहीं पायलट, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा चेंज हो, हम बस केवल इतना निवेदन कर रहे हैं कि जो द्वितीय काउंसलिंग आधार क्या है उसका? आधार ये पायलट की जो उन्होंने 200 दिवस मांगा है और 3 शैक्षणिक, वो हमारे पास है उसका अनुभव, बस उसके आधार पर। कैसे अनुभव कैसे हो जाएगा आपके पास में? जो ये इन्होंने मांगा है मालट, ये आपका 30 अप्रैल को पूरा होगा। जी मालट, हमने लगाया नवंबर तक का है मालट अब हमारे पास। आपने प्लीज पढ़िएगा, P6 पढ़िएगा। नहीं वो तो आपने लिखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 23 तक के मान्य किए जाएं। इस प्रावधान में मान्य किए जाएं। वो मालट, मगर अब तो हमारे पास नवंबर तक का है, इसलिए हम कह रहे थे हमारा इतना निवेदन कि हमारा ये रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का कर दे मालट। कैसे कर देंगे भाई? किस ग्राउंड पे कर देंगे? ये रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दे मालट। नहीं, we are not. You will have to first show your right that under which provision of scheme, circular, rules. ये मालट इनका ये है ना भर्ती प्रक्रिया की चरण मालट, पेज नंबर 25 में आप देखेंगे इन्होंने वही लिखा है, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश शासन की शाला में 3 सत्र एवं न्यूनतम 200 निर्धारित दिवस में कार्य किया हो, वे अपनी चरण ऑफ काउंसलिंग है। क्वालिफिकेशन जो भी कुछ होती है वह ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है। आपकी एप्लीकेशंस जब भरी गई थी वो नवंबर में भरी गई थी। उन्होंने कहा 30 नवंबर तक जिसका अनुभव प्रमाण पत्र उसको मान्य किया जाए। वो तो 22 का था, अभी इन्होंने 2/5/23 का नया सर्कुलर निकाला। अब आप ऑर्डर सुनिएगा, देखिएगा। श्रीमती सुधा गौतम, लंडेट काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री ब्रह्मदत्त सिंह, लंडेट Deputy Advocate General for State. Next, petitioner has filed this petition claiming direction to the respondent number 1 and 2 to permit the petitioner to appear in the counseling for appointment on the post of primary teacher in the light of guidelines dated 2/5/2023, annexure P5 in the interest of justice. Full stop. It is further prayed that respondents number 2 and 3 be directed to consider and decide petitioner's representation in annexure P6 within stipulated time. Next question. Petitioner's submission is that petitioner was a candidate for appointment as primary teacher. She had filled her form, full stop. By the annexure P3 dated 9/12/2022, various authorities were directed by the Commissioner Public Instructions to accept experience certificate up to 30 November 2022. Full stop. Thereafter, first round of counseling took place. Petitioner was not adjudged suitable. Next paragraph. Thereafter, for the second round of counseling, notice was issued on 2/5/2023. It is submitted and as is evident from annexure P6, petitioner's desire is that experience till 30th April 2023 be accepted. Next paragraph. However, Shri Brahmdas submits that experience could have been considered only up to the date on which application form was filled and not the subsequent experience. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident annexure P5 is a notice for second round of counseling. It is not a fresh notification inviting applications. Therefore, experience is to be computed as on the last date of the application or as is accepted by the Commissioner by order dated 9/12/22 up to 30th November 2022. Full stop. Therefore, plea of the petitioner that his experience till 30th April 2023 be taken into consideration is
not made out specifically because experience can be considered only up to the last date of filing of the application or the cutoff date as may be mentioned in the advertisement, whichever may be the case. Full stop. In this regard, law laid down by Supreme Court in Nitna is relevant to the controversy. Full stop. Next para. When examined from this aspect, then it is evident that since the cutoff date was 30th November 2022, therefore experience gained thereafter cannot be counted for the petitioner or anybody else. Thus, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. Serial number 70. Sir, my lord, there is humble request. Serial number 68 में call recall हुआ था, लेकिन I was on the way, तो मैं appear नहीं हो पाई थी, my lord. ठीक है, My बढ़ lord, गया, kindly consider. बढ़ गया, बताइएगा वेकेशन के बाद। Sir, urgency है, my lord, समझ रहा हूँ. टाइम से आना चाहिए मैडम, अर्जेंसी है तो टाइम से आइए, क्या कर सकते हैं? फिर आपके वो बार के सेक्रेटरी आकर बोलते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं, आप बताइए ना, अगर आप लोग टाइम से कोर्ट नहीं आ पाएंगे, My lord, कोर्ट आ गए थे, my lord. आ गए थे तो टाइम से अपीयर होना चाहिए। आज तो और भी कोई बेंच नहीं है। My lord, actually 46 से direct 67. चलिए कोई बात, चलिए। My lord, kindly consider. Sorry. 72. May it please, Lord. My lord, your lordship was pleased to grant us liberty to file a properly constituted petition to Sarpanch, Gram Panchayat, through the Secretary Gram Panchayat. Your lordship's order on the earlier occasion, your lordship will find next of P6. Thereafter, my lord, now this petition has been filed by the secretary. My lord, the contention of the petition is this, my lord, we are challenging the grant order, which is Annexure P1, granted in the year 2020 for the mineral group in favor of a private person, my lord, that is respondent number 4 there. My lord, the contention of the petitioner Gram Sabha is this, that under Rule 18 of the Minor Mineral Group 1996, the Gram Sabha was required to be an order appealable, appeal review revision सब है इसमें. My lord, the issue is they filed an appeal before the collector. The collector conducted an inquiry into these. My lords, the inquiry, if your lordship will come to page number 23. Why, my lords, they are coming in 2023 and challenging the order of 2020 is given in 2020 in page number 23, my lord. Yes. If your lordship may be pleased to see the second last paragraph, sir. कार्यालय कलेक्टर खनिज भोपाल, my lords, I'm reading at page number 23. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा भोपाल के पत्र क्रमांक दिनांक 10/10/2022 द्वारा उक्त भूमि पर जारी उत्खनन पट्टा की भूमि पर सीमांकन किए जाने का पत्र प्राप्त होने से सीमांकन किए जाने पर ग्रामवासियों द्वारा मौके पर आपत्ति प्रस्तुत की गई. My lord, it was only on 10/10/2022 when the person was granted. My lord, I preferred an appeal. I preferred the objection before the collector. I filed an appeal because this is the order. Where is the memo of appeal? My lord, page 22, my lord. It was an object, my lord. Annexure P2 was the letter which was received. P4 में तो अभी भी पेंडिंग है ना, उसके बाद क्या हुआ? कलेक्टर ने अपील डिसाइड कर दिया? Yes, my lord. The collector, that is at page number 24. 28. 24, my lord. Page 24. He says that you are coming after period of 2 years. So now we cannot. ये तो नायब तहसीलदार का ऑर्डर है भैया. No, my lord. कलेक्टर इस पे आइए. नायब तहसीलदार ने इंक्वायरी कंडक्ट करी, my lord, उस इंक्वायरी में ये आया कि ये पट्टा जो है इसको निरस्त करना चाहिए. And he gave a finding. 28 पेज पे कलेक्टर का ऑर्डर हो गया. पढ़िए. My lord, page 26 is the. उसके खिलाफ रिवीजन लगती है डायरेक्टर को. My lord, the revision, my lord, power is suo motu power. नहीं, ऐसा नहीं है. My lord, I'll read rule 57. पढ़िएगा. किताब में नहीं निकाल पाते इतनी देर में. आप लोगों को यही नहीं मालूम, सेंट्रल एक्ट नहीं है, स्टेट एक्ट है, माइनर मिनरल रूल्स है, आप गलत बताते हैं. पेज नंबर 23, इसका ये 23 नंबर का निकाल और उस पे पेज नंबर 644.
my lord, because in the instant case the order was passed by the mining inspector, he preferred an appeal before the collector. We read the power of revision under Rule 58, my lord. May I read, my lord? Page 644. By Division 1, the state government and director may at any time on its own motion, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by, or as the regulatory of the proceedings of any officer subordinate to it, call for and examine the record of any case pending before it, or disposed of by such officer, and may pass such order in reference thereto as it thinks fit, provided that no order under this rule shall be passed against any person interested unless he has been given an opportunity to represent himself in his case. Now, 2, my lord, notwithstanding, whenever under sub rule 1 a review or any matter is pending with the state government, no authority subordinate to it shall take an action. That is not relevant. Only 58(1) is relevant. My lord. So, my lord, the director and the state government on its own motion. Now, why I preferred an objection before the collector when they came. Have you ever moved before the director saying that we are aggrieved of the collector? You call for the record. My lord, in all fairness, my lord, कलेक्टर का ऑर्डर ओरिजिनल ऑर्डर है. इन्होंने कलेक्टर के यहाँ कोई अपील नहीं करी है. अपील नहीं करी. जो ग्रांट हुई है उसके खिलाफ आपत्ति पेश की. कलेक्टर ने ऑर्डर आपत्ति रिजेक्ट करी है इनकी. तो उसके खिलाफ अब अपील होगी इसके खिलाफ. आपत्ति जो हुई थी, if my lord, not an appealed order by the collector. They moved an objection before the collector. My lord, if your lordship will come to page 24. 24 years. My lord, if your lordship says the impugned order was passed by the mining inspector, which is in the year 2020. Now, page number 24, my lord. My lord, I have reproduced the typed copy. My lord, the last paragraph where the SDM has recommended for cancellation of the list to the collector. Page 24, bottom, my lord, type copy I have filed at page 24. Yes. अतः उपरोक्त अनुसार पट्टाधारी श्री अभिषेक मीणा आत्मा श्री अर्जुन सिंह मीणा निवासी ग्राम चंदूखेड़ी के पक्ष में ग्राम मुर्गा तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 138 के भाग रकबा 2 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर मुरुम खनिज का उत्खनन पट्टा निरस्ती किए जाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन श्रीमान की ओर प्रेषित की जाती. ये जांच प्रतिवेदन है. मालूम अपील थोड़ना है. मालूम my function is. His contention is that the order passed by the collector is not in appeal, and therefore this order of the collector is an original order. It's an original order, and you can file an appeal against this order. That's my contention. Then, my lord, a small liberty, my lord, indulgence of this court, my lord, the order of the collector, rightly or wrongly, has been passed on 25th of April 2023. My lords, I may be granted liberty to challenge this order, and my lords, this observation may be made that this appeal, it is an appealable order before the director. Why should we make an observation? We'll say that praise for withdrawal of this case with liberty to file appeal before the appropriate authority. Next, that's all. My lords, withdrawal. After arguing for some time, when informed by Shri Amit Seth, Learned Deputy Advocate General for the state, that the order of the collector Bhopal dated 25/4/23 is the original order, and appeal will lie against that order in terms of the provisions contained in Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996. Praise for withdrawal of this petition with liberty to file appeal as will be provided under law. But the original order is of 2020 passed by the mining inspector. And without any inquiry under Rule 18, they have passed the order. Number 73. Lord, in this matter, my learned could have started. Yesterday, I filed the caveat on behalf of respondent number 2 and 3, who is the contesting party. So I'm just praying, my lord, the copy may be supplied to me, and the for respondent number 2 and 3 to CBSE, my lord. स्वप्निल गांगुली, आपका नाम ही नहीं आ रहा, इसलिए ढूंढ रहा था मैं नाम. Shri Swapnil Ganguly for the petitioner, Shri Anubhav Jain for respondent number 2 and 3. I filed the caveat yesterday. Submits that he has filed caveat yesterday. Let copy of the petition be supplied to Shri Anubhav Jain. Shri Shukla for respondent number 1. Let reply be filed.
list on? I'm praying for first, my lord. First June. First June को है क्या bench? Thursday. हाँ ठीक है, on 1st June. ठीक. I'm like, my name may kindly be reflected. वकालतनामा फाइल करना पड़ता है उसके लिए. वकालतनामा भी फाइल किया हुआ कैविएट के साथ. आ जाएगा, नाम आ जाएगा. दीजिए. So obliging. Serial number 75, Saurabh Kumar Tiwari. Appeal none for the appealant. Appeal is admitted for final hearing. Call for the record. Listed this case along with the issue notice to the respondents on payment of PF within 7 days by registered ID post returning the 4 weeks. Call for the records. That was petition Farij clear. Serial number 76, Saurabh Bhushan Srivastava. फर्स्ट अपील है वाइफ की तरफ से. लिख लीजिए बस. श्री सौरभ भूषण श्रीवास्तव. Against decree of divorce. Petition appeal is admitted for final hearing. Issued notice to the respondents who is same matter of call for the record. Sir, in the light of section 18 of bar of section 18 will be operable. Hello. Limitation में है ना appeal तो? Serial number 77. Serial number 77. But if this is for the formal admission, criminal appeal. Shri Ramendra Singh Thakur. Appeal is admitted for final hearing. Appeal is admitted for final hearing. Call for the record list along with the reports for final hearing as per its turn and seniority. Item number 70 is also same. 78 भी same. Yes. 78 same कर दीजिए. Amol. Serial number 79, Aman Patel. ये भी same. None करके appeal is admitted वही same order कर दीजिए. ठीक है, conviction के against. Serial number 80, But if this is Chantal Kochar. This is also for the Admission same order कर दीजिएगा 80. 80.1 भी. 80.1 में आप हैं. आपका नाम बता दीजिए. प्रखर नवीन. इनका शुभ नाम लिख लीजिए. प्रखर नवीन. एक सेकंड सुनिएगा. 80.1 में इशू नोटिस टू नहीं सॉरी इशू नोटिस let reply be filed to IA 12141/23 by the learned public prosecutor within 4 weeks. List thereof. Serial number 81. Lordship, this is also a criminal appeal. Criminal appeal, my Lordship. Notice is also required to be issued. Shishir Verma, learned counsel for the appellant. Appeal is admitted. Issued notice to the victim. In the meanwhile, state may file reply to the application for suspension of sentence. That is IA 12288/23. Record be called for list after 4 weeks. Obliged, my Lordship. Serial number 82. Make this the court, your lordship. Yours, item number 82, your lordship. Lordship, in this case, the present petitioner is a class sales tax officer, your lordship, at the office. Your lordship, FIR was registered against him on 2/1/2018, your lordship. After that, the challan was filed and the charges was framed against him on 27/10/2021, your lordship. Two different charges was framed. One was under 7A of Prevention of Corruption Act, Amended Act 2018, and the second one is 13(1)B and read with 13(2) of the same act, your lordship.
My contention here is, your lordship. लोकायुक्त के वकील को नोटिस देते हैं, सुनते हैं, issue notice to the respondent. Let a copy of this petition be supplied to the standing council, learned standing council for special police establishment, लोकायुक्त organization भोपाल. सत्यम अग्रवाल सत्यम अग्रवाल है उनके वकील, श्री सत्यम अग्रवाल. लॉर्डशिप Within 7 days. तब तक का प्रोटेक्शन दे दें लॉर्डशिप. List this case in the week commencing 5 June 2023. Serial number 53. Your Lordship, I have filed reply today in the morning, Your Lordship. It is none for the petitioner. Shri Satish Verma submits that he has filed reply today. As nobody is appearing for the petitioner's case is adjourned. List after ensuing summer vacation. Obliged, sir. Serial number 92. Ashok Kumar Kota. कितनी डिले है इसमें? None for the appellant. Considered IA 12392 बटे 2023 an application under section 5 of the Limitation Act. Shri Thakur does not oppose this application for condonation of delay. Delay is condoned. Appeal is admitted for final hearing. All for the record. In the meanwhile, notices. अभी तो सस्पेंशन की एप्लीकेशन ही नहीं है. सिंपल है. एडमिशन पे लगे मतलब डिले कंडोन का. डिले कंडोन करके एडमिट कर दिया अपील. All for the record. कौन सा था? Serial number 68 में kindly kept on Monday. ठीक ठीक. Please. Obliged. बताइए. Serial number 2. केसेस का क्या हुआ? ये एक बार है ना डीबी की लिस्ट. हाँ अच्छा इसके बाद नहीं. Serial number 2. Suresh Kumar Rajak. My lord, the parents are there. I'm just बुलाई. ये ऑफ कर दीजिएगा. लाइव बंद कर दीजिए. नहीं. My lord, May I mention a matter? अब ये मेंशनिंग की स्टेज खत्म हो गई. ग्वालियर बेंच का है क्या? नहीं. तो मेंशनिंग की At the स्टेज end खत्म हो of गई. at the end of the board, Your Honor. नहीं. Item number 18, just one indulgence, Your Lordship. The reply was submitted today. Your Lordship has kept the matter after vacation. It is concerning the exams taken by the university against the rules. That requires urgency to examine. तो आना चाहिए, टाइम से आना चाहिए. Your Lordship, उन्होंने रिप्लाई देने के लिए मुझे बाहर बुलाया था और बस वो क्रिमिनल अपील्स थे उसकी वजह से वो Your Lordship नहीं प्लीज मंडे Your Lordship नहीं फ्रक्चुअस हो जाएगा Your Lordship. नहीं चलिए. Your Lordship actually टाइम से आइए प्लीज. लॉर्डशिप वो उन्होंने ही रिप्लाई के लिए बुलाया मुझे और उसी समय में बाहर ही था. प्लीज ये लॉर्डशिप एनी टाइम से आइए. ये लॉर्डशिप वो मैं तो बैठा हुआ था. ये लॉर्डशिप उन्होंने रिप्लाई के लिए बुलाया. उतनी देर में डिफरेंस आया. वो रिप्लाई देकर आ भी गए यहाँ पर. नहीं वो दीवारें पोरस हैं क्या? नहीं ये लॉर्डशिप उनके जो है क्लर्क ने बुलाया. कोई बात नहीं चलिए. ये लॉर्डशिप आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक. ये लॉर्डशिप वो मैटर not appearing in then that is absolutely against. चलिए. After Your Lordship ग्वालियर बेंच एक बार मैं उनको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ Your Lordship. बुला लाइएगा. Yes. वो मैटर है सर इसमें. सीरियल नंबर 1 श्री अतुल गुप्ता. Yes, where is Mr. Atul Gupta? Corpus is present, madam. अरे कॉर्पस तो पिछली बार भी प्रेजेंट था. बात ये हुई थी कि वो अपनी माँ के साथ जाना चाहती थी और माँ ने बोला कि उनके पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं है. शी इज lacking in financial means to maintain her daughter. जी सर. Then her father said that he is working with Mr. Atul Gupta and is only getting 2,500 rupees per month.
Therefore, we requested Mr. Atul Gupta to come. His junior on the last date informed that he is abroad.
2:15 से लीजिएगा। Well, the dean was also directed to be present. आपने मेंशन कर दिया ना इसमें? नहीं किया मैं क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया था 350. I'll just write it down. This matter reply has been filed now. ठीक है, देखेंगे इसको। My lord, item number 369. It's a matter of bail, my lord. हाँ, फिर आपने मेंशन किया इसमें नहीं किया? No, sir. नहीं कर रहा है तो टाइम से करना चाहिए था मैडम, अब अगले हफ्ते आएगा। चलिए। Lordship, item number 58, bail matter. Lordship, the request has been done earlier. Lordship, जब रिक्वेस्ट हो गई है तो बस बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? I'll take request matters. Lordship, I thought it will be request matters will be taken given in the before single bench. Lordship, therefore I did not come earlier. क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रही आपकी। Lordship, मैं पहले नहीं आया था ये समझ के कि सिंगल बेंच में रिक्वेस्ट करना होगा। हाँ तो सिंगल बेंच की रिक्वेस्ट लिख दीजिए इसमें और लिख दीजिए जिसको लिखना है। 58 लिखा है। My lord, I am making a prayer for item 262. I am praying for withdrawal with liberty to file a fresh petition, my lord. 262 लिख लीजिएगा। Shri Rohan Harne raised for withdrawal of this petition with liberty to file properly constituted petition. My lord. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Deeply, my lord. चलिए शुरू करिए। Termination of pregnancy. श्री अनिरुद्ध प्रसाद शाह कितने वीक की है? ये मतलब 16 हो गई। 16 वीक की है। Subject to medical opinion, report. Shri Aniruddha Kumar Shah submits that victim is aged about 17 years. She is a rape victim. She is suffering from 16 weeks pregnancy. Full stop. Request is made to permit her to terminate the pregnancy. Next para. Shri Shiv Kumar Shrivastava, learned government advocate, submits that for looking to the peculiar circumstances of victim being looking to the fact that she is a victim of offense under section 363, 366, 376 within bracket 2, another bracket N of IPC and 4/16, 5 within bracket 1 of POXO Act. Permission can be given subject to medical opinion. Full stop. In view of such facts, this petition can be disposed of with a direction that petitioner shall produce the victim before the आपका नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा पड़ेगा? ये सिंगरौली है। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है? जी बोलो। Shall produce the victim at government medical college Singrauli, where she will be examined by the concerned team of doctors, and after understanding her, after forming an opinion that such termination of pregnancy will not be unsafe for the victim, shall carry out the termination of pregnancy after giving her required counseling looking to the age of the victim. Full stop. For this purpose, petitioner shall present the victim before the concerned court on शनिवार के दिन on 27 May 2023 when she will be examined and necessary procedure be carried out if found fit for said procedure within 7 days thereof. In above terms, petition is disposed of. CC today. Period number 2. None cases adjourned list after ensuing summer vacation. Period number 3.
जी बताइए। This is first application under section 438 of the CRPC. जी जी I annex is some very relevant document. These are annexure A2, is number 11 to 20. जी It is crystal clear that the prosecutrix and the main accused Jitendra were living as wife husband. The sufficient documents are there. Some quarrel taken place between them. जी Hence this false implication. तो ये अनुबंध पे शादी कौन से कानून में सर होती है? इसके बाद के बाकी कागजात आप देखें जी तो इस ये हॉस्पिटल में इलाज चला, आधार सब जगह एज ए वाइफ रह रही है इनके साथ में। ठीक है, उसको नोटिस दे के पूछ लेते हैं। देखिए श्री प्रदीप नवेरिया, लर्नेड काउंसिल फॉर द applicants, let notices be issued to the victim who will be impleaded by the petitioner as a party during the course of the day to verify whether she has performed marriage with Jitendra Saket and is living with Jitendra Saket as wife or not, has voluntarily performed marriage. Sir, let notices be served on the victim by state through your lordship, government advocate or through SHO of the concerned police station. नाम लिख लीजिएगा your lordship. ठीक है। Let report be called for. List in the week commencing 5 जून 2023. I'm paying for after vacation. Shri S.D. Mishra prays for listing of this case after vacation. List after vacation before the regular bench. Five. Kumar Sharma. None cases that don't list after vacation. Period number 6. Yes, plus 438 application law. My source of implication is only memorandum. क्या लिखा है memorandum में? He has stated that not this. सरेंडर करिए, रेगुलर बिल के लिए अप्लाई करिएगा।
अभी तो आप दस्तियाब ही नहीं हुए, अभी कहाँ से रिकवरी हो जाएगी, आप भागे फिर में। Lord, but apart from memorandum, there is nothing, Lord. Lordship has, रिकवरी तो होती है, रिकवरी के लिए आप दस्तियाब होंगे तब तो रिकवरी होगी। Lord, on basis of section 41 notice, my Lord, they may, Lord, I am ready. 41 is not applicable here। Lord, Lordship, the courts have considered in this aspect, my Lord. दीजिएगा कौन सा जजमेंट है? Lordship, on the basis of memorandum reviewed. पढ़िएगा। आप बताइए, को एक्यूज को सेक्शन 41 का मेमोरेंडम, सेक्शन 41 का नोटिस दिया गया है, इतना बता दीजिए। Lordship has earlier considered, my Lord, with due respect to Lordship, in some of the cases of memorandum, my Lord, that because prima facie, it's the only source of implication is that, my Lord. Apart from that, my Lord, there is nothing in the case, my Lord, against me. I will be cooperating with the investigation, my Lord. नहीं। And recovery has been made from main accused, my Lord, Manish. ये अजय मोटे का डिस्टिंग्विशेबल है। चलिए अब संजय को पढ़ते हैं। He is also involved. ये भी डिस्टिंग्विशेबल है। One criminal record is also valid. इनका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है? एक क्रिमिनल एक्स्ट्रा 32 का ये प्रेजेंट केस है एंड 2021 का वन केस 188 to 69 to 70 to 71. Size, my Lord. But criminal record is there. Lord, one thing more I want to point out. There is no recovery required in the case, my Lord. It has been made from Manish, my Lord. नहीं, टोटल रिकवरी हो गई क्या? पढ़िएगा ऊपर से, यहाँ से पढ़िएगा। 15-20 दिन पहले जब सीधी में सम्राट चौक एवं इंद्रनगर के शराब की दुकानों के ठेके बंद हो रहे थे और शराब सस्ती मिल रही थी, तब अपने दोस्त राहुल कुशवाहा उर्फ दिवासक एवं इंद्रजीत उर्फ छोटू गुप्ता के साथ मिलकर अवैध रूप से 25 पेटी प्लेन मदिरा, 3 पेटी इंपीरियल ब्लू, 4 पेटी मैकडॉवल्स कुल 240 लीटर खरीदे थे। उन्हें इसमें 50-50 हजार रुपए उसने व इंद्रजीत ने दिए थे। राहुल कुशवाहा को बेचने के लिए 7 पेटी प्लेन मदिरा, 5 पेटी इंद्रजीत और छोटू को दिया गया है। ये जाना व्यक्ति किया है Not in 41 life is Lordship is permitting, my Lord. ठीक है, I'll pass orders। If not, my Lord. सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद सब लागू होगा। क्या चाहते हैं? Plus, इस सेम डे का ऑर्डर एक सेम डे का तो करते नहीं है वकील साहब। I withdraw with the Shri Jay Shukla, after arguing at length, prays for withdrawal of this application with liberty to surrender before the trial court and apply for recovery. My Lord, praying for after vacation. Shri, आपका शुभ नाम? Gaurav Singh Thakur. जी? Gaurav Singh Thakur. Shri Gaurav Singh Thakur prays for listing of this case after vacation. Public request list this case after summer vacation. Serial number 8. Lordship, I pray week's time in serial number 8 and 9 for producing case diary. 8 में लिखिएगा none for the applicant. Shri Pramod Thakre prays for and is granted 7 days time to call for the case diary. List thereafter. 9 is same prayer. 9 में भी same order कर दीजिए। 9 में इनका नाम डाल दीजिएगा, समर सिंह राजपूत का। Number 10. So there are two connected matters. I'm appearing in 10.1, my lord. हाँ 10.1, आप 10 में आप कर रहे हैं, अब बताइए। The applicant is mother-in-law of deceased Pooja Rashid. जी।
Marriage was performed on 22/4/2021. 22/4/21. Yes, sir. जी. And she was died on 10/2/2020 last year 10/2/23. by hanging herself last जी. year. And present applicant is working as Sahayak Adhyapak in government school last year. And there is no specific allegation against this applicant that she has demanded any dowry and ill-treated the deceased last year. क्या है पढ़िए? And as per improved knowledge, it is mentioned that पेज 9 केस डायरी में सदर मृतका के परिजन के कथन से कथन दृष्टया आवेदिका द्वारा मृतका को दहेज की मांग के लिए अन्यथा प्रताड़ित किए जाने के तथ्य विद्वान है। घटना के करीब 2 माह पश्चात भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाकर केस डायरी इसलिए उन्होंने ये बोला सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होना शेष है, जबकि आवेदिका की पति रमन 3 अभियुक्त पुलिस विभाग में करते थे और अलग से स्पेसिफिक कोई मेरिट पे इसमें कुछ लिखा नहीं रहा। और इसके अलावा इन्होंने हस्बैंड ने प्रेजेंट एप्लीकेंट के हस्बैंड जो हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन पुलिस महानिरीक्षक को दी थी अनेक्सा 1 की राशि। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो डिस्प्यूट था वो हस्बैंड और वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट था, उसके कारण से उन्होंने आत्महत्या की है। वो अनेक्सा 1 थी उसकी एप्लीकेशन राशि। जी। Yes. जी। इसमें पेज 12 में जो एप्लीकेशन जो दी है उन्होंने उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिखा है? पढ़िए। जो धनीराम वैद वो बना दी तो कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़िए। पेज 12 में लाशें थर्ड पैरा में ये है कि घटना के बाद जब मैंने अपने बेटे नीरज से पूछा कि बहू पूजा ने किस कारण से फांसी लगाई तो मैं क्या संबंध में कोई जानकारी है, तब नीरज ने बताया कि दिनांक 9/2/2023 की रात्रि में मेरे थाना प्रभारी राजीव पुरोहित का फोन आ गया था, जिनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि दिनांक 10/2/2023 की सुबह 10 बजे तक थाने पहुंचना। उसके बाद रात्रि में हम लोग भोजन के बाद सामान बातचीत करके नारायण को सुलाकर दोनों जन सो गए थे। सुबह 3:30 बजे के लगभग तैयार होकर मैं थाना हटा जिला दमोह जाने वाला था। उसी समय पूजा नाश्ता बनाने लगी। मुझे रजपुरा थाना 10 बजे पहुंचना था, जो कि सागर लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए मैं बिना नाश्ता के लिए घर से रजपुरा तहसील हटा जिला दमोह को निकल गया था। मैंने बंडा पहुंचकर, जो कि सागर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, नाश्ता चाय पी करके पूजा को व्हाट्सएप मैसेज दिया था कि मैंने चाय नाश्ता कर लिया। बंडा से निकलने के बाद लगभग 11:15 बजे मैं थाना रजपुरा पहुंचा था, जहां थाना प्रभारी महोदय राजीव से बात करने के दौरान 2 बार पूजा का फोन आया, जिसे मैंने रिसीव नहीं किया था। मैंने व्हाट्सएप मैसेज द्वारा 2 मैसेज किए थे, जिसके पहले मैसेज पूजा द्वारा पहुंच गए का रिप्लाई में हाँ था, और दूसरे मैसेज में अभी लगा रहे हैं लिखा था, जिसकी जवाब में पूजा द्वारा ओके लिखा गया था। जब मैं फ्री हुआ तो मैंने पूजा को 2 बार फोन लगाया, लेकिन पूजा ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैंने सोचा पूजा किसी अन्य काम में व्यस्त होगी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई हुई। तब मैंने अपने बेटे नीरज से पूछा कि और क्या बात हुई। तब नीरज ने कहा पापा इसके अलावा किसी प्रकार की अन्य कोई बात नहीं हुई। और नीरज बोला कि हो सकता है पापा फोन न उठाने की बात को लेकर ही कदम उठा लिया हो। मैंने नीरज से कहा कि इतनी सी बात पर बहू पूजा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती। तब नीरज ने मुझे बताया कि आपकी बहू पूजा बहुत ही भावुक एवं संवेदनशील थी, तो मायके में उसके बड़े बहन एवं भाई की आत्मा निधन से हमेशा दुखी रहती थी तथा दर्द माता पिता को लेकर चिंतित भी रहती थी। मेरे बेटी नीरज ने मुझे एक बार बहू पूजा की बर्ताव के संबंध में यह बात बताई थी कि पापा शादी के पहले सगाई के बाद मैंने पूजा से फोन पर बात की थी। उसी समय मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने तत्काल फोन को चार्जिंग पर लगा दिया था। फोन चालू करके दोबारा पूजा को फोन किया था, तो पूजा दोबारा फोन रिसीव किए जाने पर फोन से दीवार के कुछ टकराने पूजा के रोने की आवाज आई थी। मैंने पूजा के इसके रोने का कारण पूछा, तो पूजा ने बताया कि आपका फोन कट जाने का मैंने यह समझा था कि आपने जानबूझकर मेरा फोन काट दिया था, इसलिए मैंने आवेश में आकर अपना सिर दीवार में मार लिया था। पूजा ने तुरंत इसके बाद माफी मांग ली थी, मैंने दोबारा ऐसा नहीं करने की कसम भी खा ली थी। इसके बाद मैंने संबंध में उस समय कोई भी बात करना उचित नहीं समझा और पूजा को समझाकर बात पूरी की। दिनांक 16/4/2021 को शादी के 6 दिन पूर्व मैंने पूजा को व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से
घटना के संबंध में पूजा को समझाया था, जिसकी स्क्रीनशॉट दिए हुए। इसमें जो डिस्प्यूट था हस्बैंड और वाइफ के बीच कुछ छोटी छोटी बातों के लेकर डिस्प्यूट था, इसके कारण से उसने सुसाइड किया था। इसमें कहीं भी इसके खिलाफ कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है मदर इन लॉ के खिलाफ कि इसकी वजह से किसी प्रकार के उसने आत्महत्या का कोई कारण था उसने। ठीक, यस, बताइए। दोनों हो जाए तो एक साथ बता दो सर। ठीक, दोनों जी। The present applicant ये नंदेव है डिजीज का। Now, sir, the incident has taken place on 10/2/2023, and the FIR has been registered on 29/3/23. Both of them, the wife of the applicant, she's also working in the police department. He's also there in the police department. Both of them, they are living separately. I've filed all those documents to indicate the same, my lord. But may kindly have a look at various annexures which I have filed. Annexure A2 is the copy of the ID card, my lord. A3 is the allotment of the house at page 21. Then this is about the gas connection, my lord. A4. ये इसने आत्महत्या सागर में की है। जी, आत्महत्या सागर में करिए। जी, ठीक। Place of suicide is Moti Nagar, Sagar, and I am residing at a separate place, my lord. Married to the one of the daughters over there. Nandev Hayam. Sir, then we have filed a copy of the photographs which indicate that the relations between everyone was very good. My lord, may kindly have a look at page 28. The first photograph is the deceased is giving some sweets to the Nandev. All these photographs goes to indicate that the relations were cordial, my lord. And as far as I am concerned, my lord, omnibus allegations have been made. There's no direct allegation against me. If you look to the FIR also. और नंदे हुए उसी शहर में posted है. That is the only thing, my lord. I was not residing at the same place where the girl was residing. The entire photographs indicate, my lord, that the relations between everyone they were very cordial. Yes. बताइए आप किसके लिए हैं? For the objection, my lord, I have already filed the objection in the for the Manish Navaria, my lord. जी, क्या कहा? And then for the second applicant, my lord, I have not filed the objection because it's the first time today, my lord. बताइए objection. My lord, the date of incident is 10/2/2023, my lord. Yes. Thereafter, my lord, the police has not registered any FIR till 29/3/2023. Complaint कब दी थी? They on 10/2/23, my lord. I have thereafter, soon after that, my lord, my statement has been taken, my lord. The statement of their parents has been recorded by the police, but no action has been taken, my lord. Thereafter, they have compelled us to file a writ petition before this honorable court, which has been filed. That writ petition is WP number 6677/2023. जी. Thereafter, my lord, order लगाया आपने अपने objection के साथ? that order has come to, this petition come to on hearing on 29/3/2023. जी. After the hearing of that petition, the honorable court has called the records of pertain to this case. Thereafter, my FIR has been registered by the police. आपका objection कहाँ है? कब फाइल किया आपने? ये मेरा IA नंबर है 875, my lord. उसको बुलाइए लंच के बाद। 19/4/2000। ठीक है, बुला के 19/4/2000। लंच के बाद सुनते इसको बुलाइए, ऑब्जेक्शन बुलाइए। जी। Lordship, I'm filing a return in item number 33. सर एक लेटर सेट करनी है। आइए
उसके बाद तो दोपहर को फिर से जब हम डीबी से उठे तब फिर से बोला लिख के दे दीजिए, सर किसी को बोल लिख दिया लीजिएगा भाई। जी My lord, 128 and 129 हम लिख के देते हैं। आप सुबह से कहाँ थे आप? सर आई एम सॉरी सर, सुबह से जो है मुझे लगा कि ऑलरेडी नॉट रीच में, शायद नॉट रीच पहले आज सो मेरा निवेदन है कि इसी लिस्ट में। My lord, 128 and 129 नंबर प्लीज। मेरी ट्रेन लेट हो गई थी my lord। क्या हो गया? मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, दैट इज व्हाई मैं यहाँ पर नहीं पहुंच कौन पाई। से केस में बोल रही हैं आप? 128 and 129 सिंगल बेंच का ना? सिंगल बेंच बेल मैटर। लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए प्लीज। 147 147 आप सीधा शुरू करिए तो पर्ची पे लिख के ले लीजिएगा। सर सीरियल नंबर 214 को विड्रा करना चाहते हैं। हैं? सीरियल नंबर 214 को विड्रा करना चाहते हैं। 214 लिख लीजिएगा। श्री संदीप सुरदीप खनपरिया रेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस एमसीआरसी। अरे इसको ये वेकेशन में क्यों विड्रॉ कर रही है हमारे? सर ये वो डिफॉल्ट में है। हाँ तो ठीक है, रेगुलर बेंच को लिस्ट दिस बिफोर सर रेगुलर। आपकी ही बेंच अरे नहीं सुनना मेरे को ये। ठीक। आप विड्रॉ करेंगे वो मेरे गले पड़ जाएगा। सर आपकी बेंच का है मैटर। आपकी बेंच का ही है जी। रेस फॉर विड्रॉल का देख और लीजिए। 63.1 भी सब विड्रा करना। उसमें एक्यूज की तरफ से कोई अन्य अधिवक्ता ने लगाई है 63.1। 63.1 में भी इनका नाम लिख के प्रेस फॉर विड्रॉल कर लीजिएगा। ये भी फर्स्ट बेल है जी। फिर इसमें किसी अन्य अधिवक्ता ने लगा दी, हमें पक्षकार का फोन आया था कि आप वापस ले लीजिए इसको सर। और 159 की रिक्वेस्ट करना, 138 का मैटर है। 150 लिख के दे दीजिए, लिख के दे माय लॉर्ड 152 माय लॉर्ड लिख के दीजिए। विड्रॉ करना है? नहीं माय इधर लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। आइए लिख के। गर्मी की छुट्टी में आप लोग कोई भी सुबह टाइम से नहीं आ पाता, क्या बात है? नंबर 10 नेक्स्ट हाँ बताइए, आ गया इनका ऑब्जेक्शन आ गया। The application under section 302 of CRPC on behalf of complainant. ऑब्जेक्शन तो देखने दीजिए। जी My lord, और डेट ऑफ इंसिडेंट इज देख लिया, सुन देख लिया, My lord. पढ़ लिया आपकी। My lord. और क्या कहना है इसके अलावा? My lord, I want to say that, my lord, this person, Manish Naveria, is a police official, my lord. The husband of deceased is also a police official, my lord. And the sister-in-law of the deceased is also a police official, my lord. And the date of incident is 10/2/2023, my lord. But no action has been taken, my lord. Thereafter, we have to file a writ petition before this honorable बता court. दिया भाई, वो आपने उसमें Yes, repeat मत करिए। on 17/3/2023, my lord. Thereafter, it was come on hearing on 29/3/2023. On the same date, my lord, the FIR has been lodged against the FIR दीजिएगा जरा। present applicant, my lord. Until today, my lord, no arrest has been made, my lord. A special privilege has been given to the applicant, my lord. If in the case of a common person, the whole family will be arrested immediately.
ठीक जी, यस इनको तोमर जी को इनको Already they have argued that date of incident is 10 to 23 and within 2 years of her marriage, less than 2 years of marriage, she committed suicide by hanging. So there is Mrs. died within 7 years of marriage, first fact. Second fact, her death was unnatural, asphyxia due to hanging and the cardiorespiratory failure subsequently. Now third thing is that immediately after the incident, on 14 to 23, the parents, my lord, mother, father, and the sister have made specific allegation against all the accused persons. If lordship permit, Lakshmi Narayan Sharma, 14 to वो बोल रहे हैं ना, 14 to 23, हाँ, just after 3 days of the incident. वो देख लिया मैंने. The specific allegation against the present applicant, along with other co-accused, that is mother-in-law, that they have demanded money, tortured her, assaulted her. That 4 instances they have mentioned, my lord. After the one ceremony, after the birth of the child, my lord, last 5 lines, मनीष नवेरिया जो मेरी लड़की का नंदेयू है, वह जब भी ससुराल आता था तो अपनी पत्नी नेहा और साले नीरज वैद्य से बोलता था कि मेरी लड़की पूजा इस घर के लायक नहीं है, इसे किसी का सम्मान करना नहीं आता, तुम्हारे माता पिता ने शादी में कुछ भी नहीं दिया है, इससे अच्छा तो नीरज की शादी अन्य जगह को करा देते, वहां पर पैसा भी दहेज में ज्यादा मिलता, फोर व्हीलर मिलती. स्पेसिफिक एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेजेंट एप्लीकेंट एंड मदर इन लॉ आल्सो. एंड नाउ जब भी मेरी तथा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से लड़की पूजा से मोबाइल पर बात होती थी, तब भी लड़की बताया करती थी कि मुझे ससुराल में ससुर धनीराम वैद्य, सास ममता वैद्य, पति नीरज वैद्य, ननद नेहा नवेरिया, नंदियों मनीष नवेरिया परेशान करते हैं. दिनांक 27/1/23 को लड़की पूजा शर्मा के यहाँ लड़की होने पर पक्ष था. मैं और मेरे परिवार के लोग पक्ष लेकर आए थे. हम लोग पक्ष करीब 3 लाख रुपए का लाए थे. इसके बाद भी पूजा की ससुराल वाले खुश नहीं हुए. सभी लोग यह कहने लगे तुम लोग अच्छा पक्ष नहीं लाए हो, तुम लोगों ने हम लोगों के हिसाब से सही पक्ष नहीं किया. इसके बाद
तो और मेरी लड़की को ससुराल में ससुर धनीराम, सास ममता वैद, पति नीरज, ननद नेहा, नंदेव मनीष नवेरिया परेशान करने लगे। इसके बाद से जब भी लड़की पूजा से बात करना चाहिए तो पहले मोबाइल उसकी सास या पति उठाया करता था, पहले वो बात करते थे, फिर स्पीकर ऑन करके बात करते। तो कंसिस्टेंटली my lord, after the marriage the harassment is there my lord, and demand of dowry is also there. So prima facie my lord, they are absconding and the 2000 reward has been declared by the SP also. किसके ऊपर 2000 का रिवार्ड? ये इसमें आरोपी गण की दराप्ती पर पुलिस अधीक्षक महोदय सागर द्वारा 2-2 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई। दिस प्रतिवेदन केम टुडे इटसेल्फ माय लॉर्ड, सभी के ऊपर किया है कि ऑल एक्यूज आर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, एब्सकॉन्डेड है माय लॉर्ड ऑल। क्या वो एब्सकॉन्ड में चार्जशीट फाइल नहीं होती क्या? नहीं, वो दैट वी आर ट्राइंग टू ट्रेस आउट देम माय लॉर्ड एंड देन सब्सिक्वेंटली फाइल दी चार्जशीट। ठीक है। And they are also living in the Sagar mine. बता दिया तो जी ठीक है। Is anything else? My lord, just in order to add it, my lord, if you look to the FIR, initial, as far as I am concerned, इन्होंने इतनी कहा हैगा, जांच पर पाया गया, यहाँ मैं छोड़ता हूँ। उसके बाद वैद के अलावा उसकी ननद नेहा नवेरिया, नंदेव मनीषा, द एंटायर एलिगेशन वे अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द फादर इन लॉ। ननद नेहा नवेरिया एवं नंदेव मनीष नवेरिया भी तरह तरह से ताने मारने लगे और मृत्यु कहने लगे। मदर इन लॉ पे नहीं है, मदर इन लॉ पर और पति पर है। पति पर है सर। अब फादर इन लॉ गलत, मदर इन लॉ, you cannot help him by saying father in law. Mother in law and the husband, my lord. As far as I am concerned, even the Supreme Court has said, my lord, distant relatives, they should not be roped in, my lord. I'll consider. Then Case diary. there are 2 orders by your lordship also. I'm aware of this. And timing, as far as my lord friend was saying about the timing, my lord, that when the notice was issued in the writ petition, this FIR came to be registered. That is not correct, my lord. That I have seen. FIR Yes. registered at 1:24 p.m. It would be AM, my lord. AM. It would be 28th and 29th intervening night. So it is before the petition was listed that the FIR was already registered. Yes. But it's the same that on the same that the petition is also coming for the hearing. Yeah, they have very known to very have a good knowledge about the petition pendency of petition. Hello, Please, my lord. This is the first bill application, my lord. Offense under section 294, 323, 327, 506, 435, and SC/ST Act, my lord. My lord, kindly see the prosecution story in the FIR, my lord. FIR, my lord, kindly आज दिनांक 28/11/2022 को शाम करीब 7-7:30 बजे मैं काम करके लेबरों को पेमेंट देने जा रहा था। इतने में शानू यादव एवं बोनी उर्फ सुरेश यादव निवासी बिलहरी का आए और मेरी जातिगत को लेकर अपमानित कर बोले कि तूने हमारे घर में अच्छा काम नहीं किया है, और जातिगत को लेकर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और असली शब्दों से मैं बोले कि दारू पीने को पैसे दे। मैंने दोनों को गाली देने से मना किया तो शानू यादव ने मेरी कॉलर पकड़कर लात घूंसों से मारा, बोनी यादव ने हाथ घूंसों से मारा। शानू यादव ने अपनी जेब से चाकू निकाल कर अड़ा दिया था। मैं चिल्लाया तो मेरे लेबर संजय चौधरी बीच बचाव करने आया तो उसके साथ दोनों लात घूंसे से मारपीट की। फिर मिस्त्री गोलू चौधरी व अमर चक्रवर्ती वहां के लोगों ने बीच बचाव किया। शानू यादव ने मेरी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को आग लगा दी। मतलब दिस इज द मतलब इन दिस केस मतलब in the according to the FIR it is only the allegation against him कि हाथ घूंसों से मारपीट की। this is only the allegation against the present applicant. all act has done by the another co-accused Sanu Yadav is the son of the present applicant and father वहां पर थे। इन्होंने बीच बचाव किया मैलट because of this intention कि जो है कि he is the father of the another co-accused and all act has done by the another co-accused मैलट and the complaint has registered the case against us मैलट। 6 क्रिमिनल एंटीसीडेंट हैं और इन्होंने इसमें नुकसानी पंचनामा भी है जिसमें मोटरसाइकिल उन्होंने जलाई है तो उसका नुकसानी पंचनामा जलाने का आरोप शानू यादव पे मैलट शानू यादव पे शानू के ऊपर है, ये बोनी की है ये। यस मैलट बट मैलट ये इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने दूसरे से मार की बट 6 केस रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। सर 2022 में भी है, 2 केसेस रजिस्टर्ड है, सेम यही मैटर है 294 323 ST/SC ट्रायल बेस्ड जेएमएफसी मैलट एंड वो भी एक्चुअली मैलट जो केस भी appeal is filed under section 14A
of the SC/ST Prevention of Atrocities Act 2015, read with Section 439 CRPC. Case crime number 465 of 22 is registered at Police Station Gora Bazar, District Jabalpur, for offence under Section 294, 323, 327, 506, 435, 34 IPC and 3255A है वो वाह है क्या है 31R and S of SC/ST Prevention of Atrocities Act 25 Arms Act. Appellant is in custody since 29/11/2022. They submitted that the main accused is Shanu Yadav, who is son of the present applicant. Present appellant is falsely implicated. He had tried to sort out the dispute, but with a view to implicate him, he has been falsely implicated. Full stop. They submitted that allegation of causing blows to the complainant Anil Chaudhary and burning of Splendor motorcycle are on the co-accused Shanu Yadav and not on the present accused. Next, this prayer is opposed by learned Deputy Government Advocate and the counsel for the objector. It is pointed out that there is criminal history of 6 cases. Full stop. Thus, prayer is made to not to show any indulgence in the matter. Next prayer. After hearing learned counsel for the parties and looking to the fact of the case that applicant is in custody since 29/11/2022. Investigation is complete. Charge sheet is filed. Main accused is Shanu Yadav. There are omnibus and general allegations against the present applicant without commenting on merits, and all the 6 cases which have been shown to be in part of criminal history are triable by magistrate, 50,000 to sureties. Case diary is not available. Not available. None for the appellant. Case diary is not available. That case diary we called for list after review. नोटिस भी होंगे. अच्छा. 17 में. Criminal appeal है ना. And that notices we also issued to the complainant. Number 18. 18 is also case diary is not available. Ramradeva, same case diary is not available. Issued notice कर दीजिएगा इसमें to the victim. List after the week. Number 27. Number 27. So this is the first bail application. So the offences are 294, 323, 324, 326, 341. So there's an FIR against the father. Father is the applicant number 1. And against his 3 sons. एक रुक जाइए. ये तो पहले बढ़ चुकी है. 6/4 को भी बढ़ी है. नॉर्मल उसमें. So on the last date, regular bench में जाने दी. So लिखिए. This case was adjourned in April twice and then in May. List this case before regular bench after ensuing summer vacation. Oblige. 28. Lord, this is first application. Under section 4. ये भी 18/4 को बढ़ी है. उसी बेंच में जाने दीजिए. लिखिएगा. डायरी ना होने से बढ़ी. नहीं डायरी होने का ऐसा नहीं लिखा है इसमें. इसमें लिखा है as prayed by learned counsel for the applicant Shri Pravesh Naveria, list after 2 weeks. List this case before regular bench after ensuing summer vacation. Number 30. Number 23. Ambuj Jain. This is the first bail application or the offence are under. ये भी 19/4 को बढ़ी है. List before regular bench after ensuing summer vacation. Number 30. 38, 31 के छोड़ दिया आपने. 31 भी थी. हाँ जी. हाँ फाइल निकलवाई. First bail application is 38.
ऑफेंस अंडर सेक्शन सर 363, 366, 376 ऑफ आईपीसी 27/12/2022 से जुडिशियल कस्टडी में सर। जी जी। और 164 में सर उसने बोला कि मदर फादर प्रेजेंट एप्लीकेंट से बात करती थी तो डांटते थे, इसलिए वो अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई थी। आईएमएलसी में भी कोई इंजरी नहीं है सर, एफएसएल भी नेगेटिव है सर, चार्जशीट पुट अप हो चुकी सर। मैरिड 164। रुक जाइए, विवेचना पूरी हो गई इसमें? Yes, Lord. Charge sheet has been filed. चार्जशीट फाइल। But she is the minor. 164 का स्टेटमेंट तो पढ़िए। Yes. 164 statement. जी। मैं ग्राम मुकास खुर्दनी रहती हूँ। कक्षा 9वीं तक पढ़ी हूँ। 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं राजेश 15 से बात करती थी तो घर के लोग डांटते थे और राजेश से बात करने से मना करते थे। दिनांक 21/5/22 को जब घर वाले सो रहे थे तो मैं 11 बजे दिन में बबलिया से बस में बैठकर कविता दीदी के घर अंजनिया चली गई। मेरी दीदी को नहीं पता था कि घर से बिना बताए आई हूँ। मैं 2-3 दिन पहले दिनांक 29/5/22 को ग्राम अंजनिया से ग्राम मुडाढ़ी राजेश से मिलने उसके घर आई। मेरे पापा ने पुलिस में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी तो पुलिस ढूंढते हुए राजेश के घर ग्राम मुडाढ़ी आई और मुझे लेकर निवास लाए और मेरे मम्मी पापा ले आए और हमें मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्जी से गई थी, मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, ऐसा बोल। 161 स्टेटमेंट आफ्टर उसके बाद 164 के स्टेटमेंट के बाद क्या 161 स्टेटमेंट सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट वाज देयर इज देयर 164 के बाद पहले बाद में फिर उसका क्या मतलब है? चलिए। व्हाट्सएप शी इज द माइनर गर्ल ऑफ 17 years एफएसएल में क्या है? एंड एफएसएल नेगेटिव लॉर्डशिप ठीक है। एंड शी दुर्गेश सिंह रोरे। Durgesh Singh Role. This is first application under section 439 on behalf of the applicant Rajesh alias Akash Pandre, son of Shri Jeevan Lal Pandre. Under section 439 वो सब लिख लीजिए। Case crime number 99 of 2022 is registered at police station Nivas, district Mandla for offence under section 363, 366, 376 IPC and 5 and 6 of POCSO Act. He is in custody since 27/12/2022. Investigation is complete. Charge sheet is filed. In her statements under section 164 CRPC, prosecutrix has not supported prosecution case. FSL report is negative. The trial is going to take time. He is a youth of 25 years. Trial is going to take time. ठीक है. Without commenting on merits, 50,000 to sureties. Number 31. 31.1 में हूँ माय लॉर्ड में। जी 31.1 में हूँ माय लॉर्ड। 31.1 ये है जी, बताइए। फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है माय लॉर्ड 413। देखिए किसी को लगी तो नहीं? क्या हो गया, क्या गिर गया? 5 फुट गया होगा माय लॉर्ड। लगी तो नहीं किसी को? देखिए आई होप एवरीबडी इज सेफ। ठीक, इकबाल किसी को बुला के वो कांच हटवा दीजिए, किसी को चोट ना लगे। ऑफेंस अंडर सेक्शन माय लॉर्ड 419, 420, 467, 468 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 3B/4, 3D/4, 120 बी माय लॉर्ड। चालान पेश हो गया माय लॉर्ड। कस्टडी में हम माय लॉर्ड 23/2 से हैं माय लॉर्ड। हमारी छोटी बच्ची भी है। वेकेशन के पहले बढ़ चुके हैं, सबको वेकेशन के बाद रेगुलर बेंच पे लगाइए। वो लिस्ट अलोंग विथ हुई थी माय लॉर्ड। ठीक है, लिस्ट अलोंग विथ बिफोर द रेगुलर बेंच आफ्टर वेकेशन। Number 41. In this matter, Honorable Court has called the FSL report. It is awaited. It is awaited. लिखिएगा श्री समर सिंह राजपूत, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट, श्रीमती यादव। जी लॉर्ड, गीता यादव। गीता यादव, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट की पैनल लॉयर। पैनल लॉयर सबमिट्स दैट FSL report as was called for on 10/5/2023 is still awaited. List this case along with the report. With the direction. After a week. With the direction to positively on the next date. Respondents counsel is directed to positively produce the FSL report on or before the next date. List in the week commencing 5 June 2023. Highly obliged, my lords.
Serial number 42. 42 से प्रदीप कुमार नवेदिया। बताइए, वेकेशन के बाद कि विड्रॉ करेंगे? इनको बोलने लायक केस नहीं है। Navadia raised for time to argue this case list after ensuing summer vacation. Serial number 46. Number 46 is Abdullah. First bail application under section 439 of the applicant is a wife of the deceased also. Offense punishable under section 312 and 306 of IPC also. The marriage of the applicant was took place with the deceased on 21/6/2022 lordship. 21/6/2022 lordship. The husband has incident has been took place on 13/1/23. He has died due to hanging lordship. The allegation against the date of incident is 13/1/2023 and FIR was registered on 7/3/2023 lordship. After 3 months, when the mother has made a written complaint lordship. एक second, okay. I read the written complaint made by the mother lordship. FIR is dead lordship. मृतक पुष्पेन मां राम सखी कुशवाहा पति स्वर्गीय सुरेंद्र सो कैलाश नगर सेमरा अशोका गार्डन थाने पर प्रभारी विषय मेरे पुत्र महेंद्र कुशवाहा की मृत्यु संबंधी कानूनी कार्रवाई चाहने हेतु हस्तलिखित आवेदन पत्र पेश किया। आवेदन पत्र में मजमून में आरोपी रीता पटेल के विरुद्ध 306 भारतीय दंड विधान का प्रथम दृष्टिया पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिए गए। नकल आवेदन पत्र जेल श्रीमान थाना प्रभारी महोदय अशोका गार्डन मेरा पुत्र पुष्पेन की मृत्यु से दिनांक कानूनी कार्रवाई चाहते हैं बाबत महोदय लॉर्डशिप में रेलिवेंट पढ़ देता हूँ तथा गृहिणी हूँ। 2 पुत्र व 1 पुत्री है। सभी की शादी हो गई है। छोटे पुत्र पुष्पेन कुशवाहा की शादी 21/6/22 को रीता पटेल निवासी ग्राम लरेटी थाना वांडा जिला हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। हमने शादी में कोई दहेज की मांग नहीं की थी। रीता ब्याह कर हमारे भोपाल आ गई थी। पति के साथ रहती थी जिसे गर्भ रह गया था। बच्चे को हम रखना चाहते थे। रीता के कुछ लोगों से अवैध संबंध होने के कारण रीता गर्भ गिराना चाहती थी। इस कारण दोनों में अनबन होती रहती थी। रीता घर में परिवार में अलग रहने को बोलती थी जिसके उसके अन्य लोगों के साथ गलत संबंध बने रहते थे। मेरा पुत्र पुष्पेन को दहेज की झूठी केस में फंसाने व जान से मरवाने की धमकी देती चाहती थी। पुष्पेन ने बहुत समझाने की कोशिश की परंतु रीता के चाल चलन में सुधार नहीं आया। रीता की बात उसके माता पिता को बताई थी। रीता ने मेरे पुत्र को मना करने पर 10 जनवरी को सागर अस्पताल में गर्भ को 4 माह के बच्चे को गिरा दिया जिसके पुष्पेन की मानसिक तनाव आ गया था। रीता मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी। रीता ने मेरे पुत्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। प्रताड़ना के कारण 13/1/2023 को मेरे पुत्र पुष्पेन कुशवाहा मकान में फांसी लॉर्डशिप। Sir, on the same date when the incident was happened, sir, one suicide note has been, sir, seized. बताइएगा क्या लिखा उसमें? Sir, may I read, sir, suicide note, sir? पढ़िएगा। जी sir. मैं सुसाइड मैं पुष्पेन कुशवाहा पूरे होश हवास में यह पत्र लिख रहा हूँ और यह कदम उठा रहा हूँ। इसमें मेरी माँ, बहन, भाई, भाभी या अन्य किसी सदस्य का कोई हाथ या लेना देना नहीं है। मैं यह कदम सिर्फ मेरी पत्नी रीता पटेल की वजह से उठा रहा हूँ क्योंकि वह मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रही है, मुझसे और मेरे घर वालों से लड़ती है तथा अलग रहने के लिए दबाव बनाती है और वह मुझे झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकी भी देती है। कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी अगर तुम घर से अलग नहीं रहोगे तो। तथा उसने मुझे और मेरी भाभी को लेकर गलत इल्जाम भी लगाए। अलग रहने के लिए वह अलग रहना इसलिए चाहती है क्योंकि उसके अलग अलग लोगों के साथ गलत संबंध है। यह बात मैंने उसके माता पिता को भी बताई पर उन्होंने इसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और नहीं डांटा है। रीता का हटा के रहने वाले उसके बुआ के परिवार का सोनू नाम का लड़का एवं रीता की बड़ी बहन सावित्री के देवर खूबचंद के साथ गलत संबंध है तथा और भी लड़के से वह अपनी सहेलियों के द्वारा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के द्वारा बात करती है। मैंने और मेरे परिवार ने इसको कई बार समझाया पर यह नहीं मान रही है। इंग्रेडिएंट्स बन जाएंगे सर बन जाएंगे सर। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की क्या स्टेज है? चार्जशीट फाइल हो गई सर। Mohammad Shafiqullah, learned counsel for the applicant. This is first bail application under section 439 of the Code of Criminal Procedure 1973 on behalf of the applicant Srimati Reeta Patel, wife of late Pushpendra Patel. Case crime number
97 of 2023 is registered at Ashoka Garden Police Station, Bhopal for offence under section 306-312 IPC. She is in custody since 8/4/2023. Full stop. He submitted that there are omnibus and general allegations which will not constitute ingredients of section 107 IPC, so to implicate her under section 306 IPC. Full stop. Investigation is complete. Charge sheet is filed. Mrs. Nalini Gurung appears for the state and opposes the prayer. Next. However, taking this fact into consideration that applicant is a lady of 22 years of age and also a student of BSc Nursing, investigation is complete. Charge sheet is filed. Trial is going to take time. 50,000 to sure. Yeah, number 52. Number 52. Lordship. Lordship, this is third bail वहाँ बताइएगा vacation के बाद. ठीक है, this is third bail application list before the regular bench after summer vacation. Lordship. Lordship, first bail application under section 439. Yes. Lordship, offence under section 34(2) of MPF Excise Act. Lordship, जो allegation है नहीं है सर, वो नो क्रिमिनल हिस्ट्री करके और अभी तो 153 बल्क लीटर है. चार्ज पेश हो गई नहीं हुई अभी. कॉमन टॉयलेट से जब्त हुई है लॉर्डशिप. कॉमन टॉयलेट तो ठीक है, अभी चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाइए उसके बाद आइएगा. Praise for withdrawal of the application with liberty to file fresh once investigation is complete. Charge sheet is filed and witnesses of seizure are examined. 58. Okay, guys. Lordship, this is first bail application. Offence is punishable under section 304B. Date of marriage is 10/2/22 and she died on 24/2/23 by hanging. On the basis of the statements of the father, mother and one cow, we have been implicated in the offence. Actually, Lordship, the disease was having mental disorder, due to which after marriage she was taken by her father to her maternal home, and she lived there till 15th November 22. Thereafter, Panchayat was called by the father of the deceased, and we were also called there. And they convinced us that she is okay now and you may take. Yes. So within a period of one. तो ठीक है, पंचनामा क्या है? Are you disputing this पंचनामा? Yes, Lordship, they have. उन्होंने मार के लटकाया है उसको. एक दिन पहले 100 डायल में रिपोर्ट भी हुआ है. And चलिए ऑब्जेक्शन फाइल करिए, मैं देखते हैं इसको. Let objections be filed within 7 days, list there within 3 days, list thereafter. चलिए. So vacation के बाद कर दें. Regular bench में. Regular bench में कर दें. List after regular, list after vacation before regular bench. 62. This is the first bail application. 60 लीटर देसी शराब जब्त हुई है. 14/2/23 से जेल में 3 माह 11 दिन हो गए. चार्जशीट फाइल हो गई है. दांडिक प्रकरण 284/23 दर्ज हो गया है. दे दीजिएगा. 60 लीटर है. क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी? नो क्रिमिनल हिस्ट्री सर. नो क्रिमिनल हिस्ट्री कर जी. 50,000 दोषी हो गए. चलिए. 64. Lordship, this is first bail application under section 239 CRPC. Lordship, 34वीं एक्साइज एक्ट के एलिगेशन लॉर्डशिप, वो एक्ट उसके मेमोरेंडम पे हमको गिरफ्तार किया गया लॉर्डशिप.
और को एक्यूज की बेल ग्रांट हो चुकी है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप हमारे द्वारा आईए फाइल की गई है 11/629/23 लॉर्डशिप, उसमें हमने ऑर्डर लगाए हुए हैं। मेमोरेंडम पर इनको एक्यूज बनाया गया और को एक्यूज की बेल हो चुकी है, इज इन कस्टडी सिंस 11/3/2023। 12/3/2023। 54 liters, ठीक है ना? No recovery was made from him in person. क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है? 20 है लॉर्डशिप, कुल 20 प्रकरण है लॉर्डशिप। हमने आईए भी फाइल किया हुआ है, उसमें 8 केस हमारे डिस्पोज हो चुके हैं सर, हमने उसी आईए में फाइल किया हुआ है। और कोई भी केस है एक्साइज और एनडीपीएस का कोई भी केस नहीं है सर, सब मारपीट केस है। History of 20 cases, but none of them is under Excise Act or Excise Act. All are under various sections of IPC and CRPC. Out of these 20 cases, he has been acquitted in 8 cases. Copies of the orders are filed along with IA 11629/23. 65 BTRs. मतलब दिस इज फर्स्ट बिल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439। मतलब पेज नंबर 16 केस डायरी का अवलोकन करने पर दर्शित होता है कि थाना खटिया जिला मंडला के अपराध क्रमांक 22/11 एवं 25/11 सत्र प्रकरण क्रमांक 106/11 और 108/11 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 474, 34 भारतीय दंड विधि के प्रकरण में जो कि न्यायालय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संखरा न्यायालय नैनपुर जिला मंडला के न्यायालय में लंबित थे, में आरोपी अनिरुद्ध प्रसाद चतुर्वेदी पिता सभा सिंह चतुर्वेदी निवासी तिगुरी मान उमरिया के स्थान पर आरोपी कोमल पांडे उपस्थित होता रहा। आरोपी कोमल पांडे आदेश पत्रिका में अनिरुद्ध चतुर्वेदी के रूप में फर्जी हस्ताक्षर करता रहा। निर्णय दिनांक 22/9/21 को आरोपी अनिरुद्ध प्रसाद चतुर्वेदी के स्थान पर आरोपी कोमल पांडे, आरोपी दशरथ तिवारी के स्थान पर आरोपी विराट तिवारी, आरोपी रामजी द्विवेदी के स्थान पर श्याम सुंदर खम्परिया उपस्थित रह हुए थे तथा निर्णय पारित होने के पश्चात अन्य आरोपियों को सजा भुगतने हेतु जेल भी गए थे एवं माननीय उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकार होने पर जेल से रिहा होने के पश्चात पुलिस अधीक्षक जबलपुर को पत्र उपरोक्त संदर्भ में लिखित शिकायत की गई, जिसके आधार पर थाना नैनपुर द्वारा दिनांक 2/3/2023 को अपराध क्रमांक 60/23, 205, 417, 419, 420, 466, 467, 471, 506, 120, 34 भारतीय दंड विधि के अंतर्गत आरोपी अमित खम्परिया आरोपी गिरफ्तार हो गए क्या? मतलब इसमें अभी जो मुख्य आरोपी कोमल पांडे ये हिरासत में है और इसमें जो हम है मैलो इसमें हमारा किसी भी प्रकार का एफआईआर में भी कोई नाम नहीं है। हम पे सिर्फ इतना आरोप है कि हमने धमकाया है, ना हम न्यायालय में उपस्थित हुए हैं ना धमकाया है। मतलब इसमें जब कोमल पांडे को न्यायालय ले जाया गया था तो हम ये खम्परिया जी के यहाँ पे काम करते थे, हम वर्कर हैं उनके, हमें पे ये आरोप लगे हैं कि हमने धमकाया कि आप वहाँ जाओ, जबकि इनके ऊपर है कि न्यायालय में उपस्थित हुए अन्य आरोपियों की जगह और उनकी जगह जेल भी गए, लेकिन हमने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया। जो ये धाराएं लगी हैं एक भी धाराएं हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है मैडम। मैलट इनके इनके ये मेन एक्यूज है जो रामजी द्विवेदी, दशरथ तिवारी, अनिरुद्ध, इन लोगों के ऊपर 2 केस चल रहे थे। उसमें क्या है, ये 3 कोमल पांडे, श्याम सुंदर और विराट तिवारी, ये इनकी जगह रिप्लेस्ड कर तो समझ में आ गया अशोक श्रीवास्तव को क्या रोल है। इनका ये रोल है कि ये कोमल पांडे सामने इनको धमका के लेगा कि तुम्हें अपीयर होना है, ये इनका है। किसने कहा ये बात, किसका स्टेटमेंट? वह अखिलेश शर्मा का स्टेटमेंट है। मतलब अखिलेश शर्मा तो कुछ है ही नहीं इसमें। अखिलेश शर्मा क्या है इसमें? 161 में अखिलेश शर्मा हु इज अखिलेश शर्मा एंड व्हाट इज हिज लोकस? जिसको धमका कर लेगा उसने कहा क्या कि अशोक श्रीवास्तव ने धमकाया? ये इसमें ऐसा तो नहीं आया सर। इसमें शुभ नाम बोलिए आपका? विजय यादव है। विजय यादव, श्री विजय यादव, विजय कुमार यादव, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट अशोक श्रीवास्तव। दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439। सेक्शन होगा सब लिख लेना है इसमें। It is submitted that applicant is innocent. He is in custody since 3/3/2023. Full stop. It is submitted that there are omnibus and general allegations. He has been made and accused on statements of under section 161 of
वंशरी कौन से शर्मा? अखिलेश शर्मा. अखिलेश शर्मा. Full stop. The main persons who were allegedly threatened by the applicant have not deposed anything against the present applicant. Investigation is complete, charge sheet is filed, trial is going to take time without commenting on merits. And his case is different from other co-accused persons against whom there are direct allegations of replacing the main accused persons with other persons and defrauding the process of court. वन अदर क्रिमिनल केस भी है, क्योंकि 2 केस थे तो उनका 2 केस और. This is the first bail application. सर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया. देखिएगा श्री साहू for the applicant Shri D.K. Shukla prays for time to call for the criminal record. It's a case of 306. Huh? 306. Taking list next week. This is first bail application under 439, offense under 34(2) of Excise Act. Co-accused person has already been released on bail. That order is at page 15. 59 liters have been seized. He is in jail since the past 7 months now. Co-accused has been released on bail. No criminal record. No criminal record. With a view to maintain clarity. 50,000 दोषी. Deeply obliged. 81. MP Excise Act. Offense under section 34(2) of the MP Excise Act. 20/4/23 jail में no criminal past relating to Excise Act. Only one IPC case is against him. It is travel by mistake first class. 60 लीटर है. No criminal history of similar nature. 50,000 दोषी. 53. This is first application, Lord. After charge sheet is to be filed. Charge sheet not been filed. लिखिएगा. क्या withdraw करेंगे? Charge sheet has been filed. After लिखिए. Praise for listing of this case after ensuing summer vacation. List after ensuing summer vacation. 56. This is first application under section 439 में लॉर्ड. सर इस केस में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई और टीआईपी कंडक्ट कराना है सर. नहीं सर, वो मेरा निवेदन ये है सर, इस इंप्यूग्ड ऑर्डर को देखिए. इन्वेस्टिगेशन हो जाने उसके बाद आइए. Let investigation be completed. List after ensuing summer vacation. 58. फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर 439 ऑफिस 34 एसआई एक्ट पर 16/4/2023 से जेल में. कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. कर दीजिएगा 50,000 नो क्रिमिनल रिकॉर्ड करके. 50,000 तो श्योरिटी. 96. Lordship, in this case, age of prosecution is 15 years. Age of prosecution is 15 years. Notice जाएगा. Notice जाएगा. Lordship. Served है. Yes, Lordship. Lordship 164 हमारे खिलाफ बोली है. फिर क्या करना? Withdraw करना. FSL is also positive. Kailash Dev Singh pleads for withdrawal of the application. Accordingly, the application is dismissed as withdrawn. 101. Hello, this is first bail application under section 439, my lord. Lord, police has registered the case offense under section 363, my lord. Applicant is in jail from 6 May 2023, my lord. My lord, according to prosecution, my lord, no case made out under section 363 on me, my lord.
My lord, prosecution still. रुक जाइए। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है? चालान भी हो गया। कर दीजिएगा। चार्जशीट इज फाइल्ड, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, देयर इज नो क्रिमिनल हिस्ट्री, ट्रायल इज गोइंग टू टेक 50,000 टू शो। So kind of. 106. Lordship, this is 439 first bill application. Offences are under section 34(2) of MP Excise Act, my lords. 63 bulk liters of countryman liquor has been seized from two individuals, my lords. I'm in jail since 12/5/2023. इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए फिर आइएगा। जी सर। इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर। I have no criminal record whatsoever. तो क्या कर सकते हैं? Sir, he is having criminal records, sir, of different nature, sir. इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद आए। जी सर। क्या विड्रॉ करेंगे कि? No, my lords, after we कर दें। Please for time to argue this case after vacation. Just after ensuing summer vacation. Extremely sorry. 101 में चालान पेश नहीं हुआ। गलत क्यों बोला आपने? उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। 109. Lord, first bill application 439 Lordship. Offence under section 496 Government Procedure अधिनियम arrest 26/3/2023 as per allegation Lordship, the present applicant transporting the illegal transporting to the Govans 31 Govans त्रिपाल में as per FIR Lordship 26/3 को थाना गणपति में मिली सूचना के आधार पर लक्ष्मण दांगोरे आरक्षक तिजोरी आरक्षण विजेश घटनास्थल पर इच्छापुर रोड इंदौर इच्छापुर रोड ताजपुर नगर में दरते के पास चेकिंग करते समय पीले रंग के अशोक लीलैंड वाहन से जांच की तो वाहन के ऊपर पीले रंग क्या वो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया? अभी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो वेट करिए अभी। चार्जशीट लॉर्ड थी शायद कल पेश होने वाली थी तो उसको आफ्टर वेकेशन। जी लॉर्ड। लिस्ट आफ्टर वेकेशन ओवेल। सर 457/380 आईपीसी है। ये 27/2/2023 से जेल में है और इसमें क्या सर जो अदर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे इनके 2-3 मामले में, इनमें बेल ग्रांट हो गई है हाई कोर्ट से ही। एक MCRC नंबर 14846 में कॉपी पेश करिए। कॉपी पेश करिए। एक की तो है मेरे पास सर। सभी की ले आइएगा। प्रेज फॉर टाइम to produce copies of the orders passed by coordinate benches list after a week. 117. 114 का क्या हुआ? ठीक है छोड़िए। बाद में none cases that despite mentioning the case for out of turn year cases adjourned list after entering summer vacation. 119. Lordships, 439 first bill application. Offences are under section 376 AB 506 read along with 5/6 of POSCO Act, my lords. Prosecutrix has been examined before the court, my lord, and she has turned hostile, my lord. DNA report क्या कहती है? My lords, DNA was uninterpretable, inconclusive in nature.
8 साल की बच्ची है, 8 साल 6 माह। जी 8 साल 6 महीना। जी कहाँ है उसका स्टेटमेंट प्रोसिक्यूट्रिक्स का? I just received the copy. फाइल करिए इसको। Please for time to file statements of the prosecutrix list after ensuing summer vacation. My lords. 120. Agency. My lord, first bill, first vote for 439, offense under section 354, 376, 376 3 of IPC. Prosecutrix and her mother has declared hostile, and FSL report is also negative. Initially, the offense had been registered under section 354. Just a minute, prosecutrix का statement पढ़ने। Page number 10. एक second. बताइए। श्री गौरव सिंह ठाकुर। गौरव सिंह ठाकुर। सब लीजिए ना फर्स्ट बिल एप्लीकेशन। Prosecutrix and her mother are hostile. FSL report is negative. 50,000 to sureties. Public. जी आएगा, जब आएगा तब बताइए। नहीं पाएगा नहीं। हाँ? निकल से तब जाने दीजिए। सच में क्या हुआ था? ठीक है, नहीं थे तो बोल दीजिए, चलिए बाद में देखेंगे, अलग रखिए एक सेकंड। 123. This is an application under section 439. He has been in custody since 8/5/2023. And the offences are 408, 409, 420, 467, 468. जी सर। इन्वेस्टिगेशन हो गया? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। इसमें जो मेन एक्यूज था उसकी बेल ट्रायल कोर्ट से ही हो गई। I filed a copy of that order with the direction that he is required to deposit 14.7. That this was the initial amount of defalcation, 14.75, and he was the president of this society, my lord, which used to sanction loan. As far as I am concerned, I was merely the cashier over there. The committee is there, the loan sanction committee is there under the bylaws. I filed the copy of the bylaws also. Now the order which has been passed in respect to the case that is contained at page 55, my lord. इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद आइए, उसमें कुछ नहीं है। गलत दे दी है, ट्रायल कोर्ट ने इतनी जल्दी क्यों दिखाई? और हमारे उसमें उन्होंने कह दिया 5 गवाहों के बयान लिए गएंगे, लेकिन उसको उन्होंने बेल दे दी और हमारे लिए ऐसा बोल दी। I am the authority who disburses it, that's all, my lord. Being the cashier over there. This also admitted that I am the cashier, my lord. Yes. और उसके बाद अब इन्होंने कहा है कि 2.75 करोड़ हो गया है। ये डिफाल्केशन जो है इनिशियली 14.75 था, now it is 0.75. Now as far as the other co-accused persons, they did not choose to file an application for cancellation of that bail. इतने मेहरबान क्यों हैं आप सब लोग? उसके लिए जज साहब in fact वो मत कहिए, वो आपके लेवल पे शोभा नहीं देता। ना मतलब Malord will be soon filing that cancellation of bail उनका भी। I am for the society, Malord. ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए। ऑब्जेक्शन फाइल फाइल्ड within 2 No, it has been filed. It is there. फाइल हो गया। फाइल हो गया सर। ठीक है। List after before regular bench after ensuing summer vacation. 128 भी साथ में ही है क्या? 128 नहीं। और सर वो 2.75 करोड़ का ऑर्डर हाईकोर्ट ने स्टे करके रखा था। ठीक है। Therefore, I was prima facie trying to make out a case before my lord, and I was asking for a parity, my lord, without going into anything else. Regular bench करेगी। आ गए 101। हाँ बोलेगी। एक मिनट रुकिए, प्लीज एक मिनट रुकिए।
भाई इनकी केस डायरी नहीं हुई, इसको मैं एडजॉर्न करना पड़ेगा ये नेक्स्ट वीक के लिए। वो मिलोट मेरा एक निवेदन है मिलोट, मिलोट जो इंटून्ड ऑर्डर है उसको देखना, उसी में आया है कि हमारे खिलाफ हम कभी रीवा गए नहीं, रीवा की घटना है, हम ना तो कभी रीवा, हमारे खिलाफ 363 बनता नहीं है। मेरा निवेदन है सिर्फ इंटून्ड ऑर्डर देखना। इसमें जो है ना 101 आप ही ने लिखना था क्या? उसमें वो बस चार्जशीट इस फाइल उतना हटा दीजिए उनका स्टेटमेंट। सो काइंड ऑफ यू Well, this is first bail application under section 439. All accused are enlarged on bail. One accused is enlarged on bail on 6/9/2022, and all the accused are bailed by ADJ Balaghat. Only I am the custody since 25/5/2021. मोटरसाइकिल जब्त की गई है, मतलब इसमें अज्ञात के नाम की एफआईआर थी और हमारा जो पुराने केसेस है उसकी जब्ती आपसे हुई है कि नहीं हुई है? 5 मोटरसाइकिल की हुई है और 9 पुराने केसेस भी हैं जी। पुराने केसेस है मतलब तभी हमारा नाम लिया गया। छोड़िए, आप तो ये बता दीजिए जब्ती का बता दीजिए। जब्ती का हम मतलब जब्ती पुलिस ने बनाई है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पुराने केसेस के कारण पुलिस ने इसमें हमारे उसमें लिख दिया है और हम 2021 से जेल में। ठीक है, रेगुलर बेंच में बहस करिएगा। लिस्ट आफ्टर फॉर वेकेशन 129 ये भी सेम ही है, सेम है 146 फर्स्ट एप्लीकेशन सर जी। अरे ये वेकेशन के पहले क्यों बढ़ा रहे थे आप जी? फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या? वेकेशन के पहले भी आपने बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया नहीं था। उस दिन सरकारी वकील साहब ने ये किया कि वो टीआईपी हुई है कि नहीं पता, नहीं हुई, इसमें चालान फाइल हो गया सर, और कोई क्विज की जरूरत ट्रायल कोर्ट से हो गई। इसमें जानकारी तो टीआई साहब से हुई थी। Lordship, I have collected the information. Two things has to be verified whether charge sheet has been filed or not. Charge sheet has been filed in the matter. इनसे जो 4 मोबाइल और जब्ती हुई है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन वो नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो चोरी गए थे उनके नंबर्स थे उनके पास, तो वो नंबर मैच हुए हैं इनसे जो सीज हुआ है। अरे वो तो ठीक है, तो टीआईपी क्यों नहीं कर रही आपने 2 महीने में? हाँ नहीं की, उन्होंने यही बताया। हिस्ट्री क्या है इनकी? एक केस है सर, उसमें सेम दिन की घटना है सर। 63 उसका जो क्राइम नंबर है, 2 केसेस 63 है, उसकी बेल A2 लगाया मैंने। 2 cases of the बेल same हुई। Already on bail in one of the cases. Investigation is complete. Charge sheet is filed. No TIP is conducted. 50,000 to surety. Oblige. 147 First application 439, offense 34(2) of excise act, Lordship. On the basis of the memorandum, Lordship, who accused Dharmendra. इसमें लास्ट टाइम सर ये योगेश और योगेश एक ही व्यक्ति है, उसकी जानकारी चाहिए थी सर। क्या बोल रहे? लास्ट टाइम वेरीफाई करने के लिए बोला था सर कि योगेश और योगेंद्र हाँ दोनों एक ही व्यक्ति है कि नहीं? हम पूछिए ना। क्योंकि इसमें कैप इनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है कि नहीं है? कहाँ छोड़ा है कैप? जी तौलिया बांधे हुए थे सर। तौलिया बांधने के बाद उसको निकालने का कैप पहनी जाती है नहीं पहनी जाती? हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं यूनिफॉर्म में आना चाहिए, कोर्ट में नहीं आना चाहिए। जी हाँ, क्या क्या पूछ के आए ये बताइए। इसमें जो आई हुई है सर, उसमें ये 2 नाम में सर, एक योगेश और योगेंद्र थे सर। तो गिरफ्तारी के समय सर इन्हें नाम दूसरा बता दिया था अपना, झूठ बोल दिया था जी। योगेश तागी, आप समझिए इनकी बात सर। ये इसमें लास्ट टाइम ये कहा था कि योगेश और योगेंद्र अलग अलग हैं कि एक ही हैं सर। इनका क्या कहना है? और योगेंद्र ने इनका कहना है कि गलत नाम बताया था धर्मेंद्र ने। तो इसकी जानकारी चाहिए थी कि योगेश और योगेंद्र एक ही व्यक्ति है, और डायरी के हिसाब से सर तो योगेश और योगेंद्र लिखा हुआ है। पर इसमें डायरी में और आगे भी उल्लेख है कि योगेंद्र अलग है, इसका भाई है, और योगेश अलग है। और योगेश जो है अभी अप्रैल में 2000 में अरेस्ट हुआ है सर।
और उसका नाम छोटू है उस। हाँ, तो इसमें मेन एक्यूज तो योगेंद्र है ना? योगेश सर। योगेश है योगेंद्र? योगेंद्र सर। है? योगेंद्र और ये लोग, इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि इनके दोनों के, योगेंद्र और योगेश के कहने पर शराब खेत पे रखी थी और जब्ती जो है वो कहाँ से हुई है? जब्ती कहाँ से हुई है? खेत से, खुले खेत से? लॉर्ड खेत से सर। खेत से लिख लेना भाई, जब्ती खेत से हुई है, फ्रॉम ओपन फील्ड, not from the possession of the present applicant. He is in custody since इतना 50,000 to surety. लॉर्डशिप इसमें ये 90 लीटर है लॉर्डशिप। सेम ऑर्डर कर दीजिए। ये भी खेत से हुई है क्या? नहीं, कोई एक्यूज के मेमोरेंडम सर ये 47.1 जो है, हाँ, क्राइम नंबर अलग है सर। अलग है। अच्छा, तो फिर साथ में क्यों लग गई है? ये लॉर्डशिप, ये एक और इसका केस था, उसमें ऑलरेडी लिस्ट आफ्टर समर वेकेशन का ऑर्डर था, 147.1 में लिखिएगा, देयर इज ऑलरेडी एन ऑर्डर टू list this case after ensuing summer vacation. List this case after ensuing summer vacation. हो गया। 149. Now, this is first bail application under section 439. The offences under which I am charged is section 294, 323, 324 and 506. Afterward, Lord, 326 were added. The only allegation against the complainant is, Lord, that I just abused the complainant and slapped and punched the complainant, Lord. As per the FIR, Lord, if my Lord may permit, I just read the FIR, Lord. May I read, Lord? क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी, राहुल की? क्रिमिनल हिस्ट्री सर there are omnibus and general allegations against the present applicant. हाँ ठीक है, आपका नाम आ जाएगा इसमें। जो हमारा ये कहना है कि 307 का ऑफेंस बनता है इनके खिलाफ, 326 से हमें ऑब्जेक्शन के साथ जो चोट आई उसकी वो फाइल करेंगे, फोटो फाइल। वो चोट इनके पिता ने पहुंचाई है, जुगराज यदुवंशी ने पहुंचाई है। The fatal injury was caused by Shri Jugraj Yadunvanshi within ASEA and not by the present applicant. There are omnibus and general allegations. There is no criminal history of the applicant. He is a youth of 19 years. ठीक है, क्या दोनों की फाइल कर दी क्या इन्होंने? Not 3 applicants are there. One is 4 है सर। 4 टोटल 4 है। जुगराज जुगराज ने आसिया से। हाँ ठीक। There are general and omnibus allegations against the present applicants, 50,000 each to sureties. Highly obliged, Lord. नाम हाँ, आपका शुभ नाम डाल दीजिए ऑब्जेक्ट के लिए। लॉर्डशिप ये जुवेनाइल बालक है जिसका हमने रिवीजन लगाया हुआ है। यहाँ पे दोनों कोर्टों का रिकॉर्ड लॉर्डशिप आ चुका है। जुवेनाइल बोर्ड ने डिसाइड किया पहले, फिर हम सेकंड एडीजे के यहाँ अपील में गए, अपील कोर्ट का भी रिकॉर्ड आ चुका है। दोनों कोर्टों का रिकॉर्ड आ चुका सर। उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी रिपोर्ट होगी। 6-7 महीने से लॉर्डशिप ये जेल में है। इंसिडेंट के तुरंत बाद अरेस्ट कर लिया गया था। फिर 1 तारीख को उसकी बेल हो गई थी लोअर बोर्ड से लॉर्डशिप। फिर उसके बाद प्रोविजनरी ऑफिसर की रिपोर्ट बुलवाना पड़ेगी लॉर्डशिप। रिकॉर्ड में होगी प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिपोर्ट, क्योंकि दोनों कोर्ट का रिकॉर्ड आ चुका है जी। और डायरी भी बुलवाना पड़ेगा जी। डायरी भी बुलवाना पड़ेगा। डायरी भी नहीं है। नहीं मैंने तुमको शुभ नाम डाल दी। इतना इनका नाम डाल दिया। अजय ताम्रेवाल प्लेस फॉर टाइम टू कॉल फॉर द केस डायरी। दैट केस डायरी वी कॉल्ड फॉर दिस नेक्स्ट वीक। उसी के साथ आएगी, उसी के साथ आएगी। आज समर वेकेशन में क्या अर्जेंसी आ गई?
List before regular bench after ensuing summer vacation. 2021 की सीआरआर माय लॉर्ड एक्चुअली क्या है कि ट्रायल कंक्लूड हो रहा है। होने दीजिए। 153 डिवीजन अगेंस्ट कन्वेक्शन 1 ईयर आ रहा है। हाँ, 10 फरवरी से जेल में है सर। 304 ए का मैटर। रेगुलर बेंच पे जाने दीजिए। सर 3.5 महीने हो गए सर। 63 साल की उम्र है सर। ठीक। लिस्ट बिफोर रेगुलर बेंच immediately after ensuing summer vacation. 156 This criminal revision convictions 1 year 34 excise act. हाँ। ठीक है। March. Regular bench list before regular bench after ensuing summer vacation. 159 सर 138 में 1 ईयर का कन्वेक्शन है सर। 60 साल की आए हम 50% डिपॉजिट करने के लिए तैयार। 50% नहीं, पूरा जमा करके आ जाइए, फिर आगे की बात करिए। सर इसमें फिर रिकॉर्ड सर आफ्टर वेकेशन कर दें और रिकॉर्ड कॉल नोटिस भी कर दें सर। And in the meanwhile records be called. सर नोटिस भी रिस्पोंडेंट को कर दें। Notice to the respondent on payment of PF per registered AD post within 7 days returnable 4 weeks. वो ब्लैंक 161 What are the 61 this time? 61 61 161 161 Lord, this is first bail application under section 430 of CRPC, offences under section 376 2N and 506 of the IPC. My lord, applicant in jail से 25/3/2023. Prosecutrix examine हो गई। नो my lord, ये जो है शादीशुदा महिला को शादी का झांसा दे करके 4 साल। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा, प्रोसिक्यूट्रिक्स एग्जामिन हो गई? नहीं, एग्जामिन नहीं हुई my lord। एग्जामिन हो जाए फिर आइएगा। सर गांव का है। क्या वो गांव में एग्जामिन नहीं होते क्या विटनेस? नहीं, आफ्टर वेकेशन करते हैं। नहीं भाई, इसमें जब तक एग्जामिन नहीं होगी तो क्या होगा? दुश्मनी है आपस में दोनों। होगी, प्रोसिक्यूट्रिक्स का और बयान तो जाने दीजिए। 4 ईयर डिले है my lord FIR 4 जून 2019 से और 9 जनवरी 2023 तक बलात्कार हुआ और 25/3/2023 को जो है FIR होती है my lord। ठीक है, प्रोसिक्यूट्रिक्स का एग्जाम बयान तो जाने दीजिए। और एक बार एक अपने भांजे को, सगे भांजे को फंसा चुकी है उसमें। और बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट प्रोसिक्यूट्रिक्स का एग्जामिन हुए बगैर इसमें क्या होगा? इसमें मैं पता कर लेता हूँ my lord आफ्टर वेकेशन का। Raise for time to find out whether prosecutor is examined or not. List in the month of July 2023. 164 304A in section 338 RI for 1 year. And he is in jail of date of judgment, your lordship. The date of judgment is 13. All for the record. List this revision along with the record. My lord, kindly see the order dated, your lordship, the para 3 line of the judgment. भाई रिकॉर्ड के बगैर रिवीजन थोड़ा ना सुनी जाएगी। दो कोर्ट से आपके खिलाफ आ जी 2 कोर्ट से है, लेकिन इसमें मोटरसाइकिल ओवरटेक की। रिकॉर्ड आ जाने दीजिए, फिर सुन लेंगे आप। May kindly list on the 12th of list in the opening week. चलिए। 165 Petitioner is convicted under section 138 of the negotiable instruments act for 1 year, my lord. हाँ, चेक जमा अमाउंट जमा कर दिया, फाइन अमाउंट? No, my lord, it's not deposit, my lord. ठीक है, issue notice to the respondent on payment of PF per registered AD post within 7 days and 4 weeks. All for the record list along with the record in July 2023. My lord, it may be posted on June, my lord. I will deposit the money, my lord. ठीक है, in June after in week commencing 26 जून 2023 चलिए। 166 My lord, applicant has been convicted under section 25(1)(b) Arms Act, my lord, RI 1 years. इसमें my lord there was two witness who has become hostile, my lord. PW1, PW2, who is seizure witness, my lord, in this case. इसमें 2 ही मात्र गवाह हैं और दोनों हॉस्टाइल हो चुके हैं। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ आईओ की स्टेटमेंट के आधार पर इसमें 1 साल की सजा दी गई है। रेगुलर बेंचेस भाई का लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 12 जून हो जाते हैं।
168. सर 10 ईयर कन्वेक्शन है, 5 साल 7 महीने जेल में। फिर ओनली कस्टडी पीरियड पे प्रेस करो। Third bill was dismissed on merit order. मेरिट की By the बात order नहीं, date. ओनली कस्टडी पीरियड 5 साल 7 महीने हो। वेकेशन के बाद सुनाएगा रेगुलर बेंच पे। ठीक है सर। आफ्टर वेकेशन बिफोर द रेगुलर बेंच। मत चलने से। List after extreme summer vacation. 180. Lord, this is the first suspension of sentence. RI for 2 years. Already she is lady, my lord. Already jail sentence is 11 months, 18 days today, my lord. अभी आधा तो जाना ही है वेकेशन। लॉर्ड सस्पेंशन सिर्फ 2 years और 10,000 का फाइन है, my lord. Immediately after vacation. The big commencing 12 June 2023. Oh bless. 200. मुझे 3 year conviction लॉर्डशिप लॉर्डशिप ऑन बेल है 28/5/2023 तक लॉर्डशिप। फाइन अमाउंट हैज बीन डिपॉजिट लॉर्ड। श्री आदित्य व्यास। आदित्य व्यास। Fine amount is suspension at 28 तक। Taken appeal is admitted for final hearing. All for the record suspended sentence shall remain suspended on furniture को 50,000 रुपए का bond and 2 sureties of the same amount. It shall appear before the trial court on 7 अगस्त 2023 and the date so fixed before the trial court. ऑन बेल मैटर लॉर्डशिप 10th जून तक सस्पेंडेड है। फाइन अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट लॉर्डशिप। कितने साल का करने? 304A में 2 years का लॉर्डशिप बाकी और 201 में RI फॉर 6 month। सेम ऑर्डर कर दिया सेक्शन का लिख दीजिए। मच भाई 202. Gradation. Lordship, the conviction is for 4 years. Record may be called also. NDPS. Is admitted for final hearing. Record be called for. Oh, bless. Just for final hearing as per its term and security. 203. Lordship, after vacation. Okay. My lord, this is for suspension of sentence. The sentence was for 3 years, and the accused person has already there in imprisonment for 2 years 3 months. Around 2 years 3 months, my lord. Fine amount जमा कर। Yes, my lord. Yes, my lord. रेगुलर बेंच पे सुनाइए कल लिस्ट My lord. बिकॉज़ ये रेगुलर बेंच। My lord में कहीं 204. Against conviction वाले offense 457 वाला RI 3 years वाला टोटल कस्टडी पीरियड 1 वर्ष 3 माह हो गया। 389 लगा ही नहीं। जस्ट बिफोर रेगुलर बेंच आफ्टर समर वेकेशन। 205. लॉर्डशिप शॉर्ट सेंटेंस लॉर्डशिप 3 year लॉर्डशिप एंड ऑन बेल लॉर्डशिप 3/6/2023 तक लॉर्डशिप 3/6/2023 तक है। सुनिएगा 3/6 तक सेंटेंस सस्पेंडेड कर दीजिएगा। 50,000 दो श्योरिटी shall appear before the trial court on 7 अगस्त 2023। फाइन अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट लॉर्डशिप। Fine amount already deposited। रिपोर्ट कॉल को 208.
May I please your lordship? This is a first application under section 389. The offences under which we are convicted is of 306. इसके साथ 208.1 भी लगा है सर. 208.1 के लिए 208 में ऑलरेडी 389 अलाउ हो गई है प्रीवियस डेट पे. नहीं, उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उसके लिए लगा है सर. ये उसका ऑर्डर कब अलाउ हुई है? सर प्रीवियस डेट को 18/5/2023. दिस इज द ऑर्डर. बहुत लगी सुनील अहमद की 10 साल की. हाँ, आपका केस तो राहुल से अलग है, राहुल का नाम नहीं था. लॉर्डशिप फॉर अ मोमेंट लेट मी रीड द सुसाइड नोट. प्लीज पढ़िए. Lordship, page 12 of the suicide note, P10. पेज 12 पढ़िए. Lordship, इस दुर्घटना का मुख्य कारण इन लोगों ने हाथ उठाया, नहीं तो मैं कदम नहीं उठाता. Lordship, there was no allegation against me that I have beaten the deceased. नाम कहाँ है? पढ़िएगा ना, सुसाइड नोट पूरा पढ़िएगा. Lordship. आधा अधूरा पढ़ने से कैसे काम चलेगा? Lordship, from the page number 2 because page number 1 is not readable. जी. मैंने समिति में चना मसूर बेचा जो कि हिम्मतलाल द्वारा दी गई पर्ची. मैंने हमको वह पर्ची में सुधार का कार्य करवाने के लिए हमसे सुरेंद्र पटेल, प्रकाश पटेल, किसानी मोहल्ला गोटे गांव वाले के हाथ पर्ची में हस्तक्षेप के कारण मेरे ऊपर जो आरोप एवं मानहानि की घटना सामने आई है, इसकी जिम्मेदारी सुरेंद्र पटेल, दैट इज द मेन एक्यूज्ड, की है. उन्होंने हमको लालच दिया था कि तुम हमको पर्ची दे दो, तुमको अधिक मात्रा वाली पर्ची लेकर दे दूंगा, फिर तुम हमको 4,000 रुपए दर के हिसाब से भुगतान हमको सुरेंद्र पटेल को कर देना. जब हमको पर्ची सुरेंद्र ने ला के दी थी. रुक जाइए. बताइए. सुनील का तो नाम ही नहीं है सर. पैरा 18 ऑफ द जजमेंट देखिए. पढ़िए सर. विवेचना की तैयारी PW5 में भले ही स्वीकार किया है, प्रादस P10 के सुसाइड नोट में आरोपी राहुल का नाम लिखा नहीं है, किंतु मुकेश PW3 एवं प्रादस D3. तो डील हो गया. इनका बताइए, सुनील का बताइएगा. सुनील का नाम कहाँ है? सुनील का पैरिटी उनका नहीं है सर. टीम में जो लगा है ना सस्पेंशन के ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर कर दीजिएगा. पैरिटी. Lordship, may I submit? May I submit? My name is there, but there is an omnibus allegation in this. Name is mentioned, but there are omnibus allegations in this right now. Main accused is Surendra Patel. Oh, please. मिलोड, ये सोनू यादव वर्सेस स्टेट, इसमें 1 साल का सश्रम कारावास और 7,000 रुपए से का जुर्माना है मिलोड. इसमें 354 के तहत उनको 1 साल का सश्रम कारावास दिया है मिलोड. प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं मिलोड. इसमें रिकॉर्ड बुला के देखते हैं. इशू नोटिस. The prosecutors call for the record. This case along with the report for consideration of application for suspension of sentence. Obliged, madam. 216. Much.
वेकेशन में क्या अर्जेंसी है इसकी? 2021 की पिटीशन है. व्हाट इज द urgency during vacation? My lord, मेरा हमारा major penalty and minor penalty both are in continuing. बताइएगा, रेगुलर बेंच में बताइएगा. अभी कमेंशन कर दीजिए. मैं There is no urgency to hear this case during summer vacation. Accordingly, IA 7444/23 is dismissed as not maintainable. List before regular bench in due course. चलिए. My lord, हो गया. क्या urgency है इसकी 2004 की अपील को आज सुनने की? लॉर्डशिप इसमें नॉन अवेलेबल वारंट हुआ था, उसमें यार 24/4/2023 से अरेस्ट हो गए लॉर्डशिप. फाइनल भी नहीं सुनवाई लॉर्डशिप हो पा रही है. फाइनल में लगा देंगे. There is no urgency in the matter. List before regular bench for final hearing. Lordship, this is a criminal appeal. We have moved an application for cancellation of arrest warrant, which was issued against the applicant number 1. अभी कोई urgency नहीं है. Vacation. Your Lordship, arrest warrants have been issued against. आप नहीं जाएंगे तो यही होगा. Your Lordship, we have also mentioned that summer vacation. दो साल का सेंटेंस है लगभग, और ये प्रोस्टिट्यूशन का केस है कि नल के पास एक गांजे का पेड़ मिला था. वेकेशन के बाद रेगुलर बेंच में बताइए सर. इमीडिएटली आफ्टर वेकेशन फॉर द रेगुलर बेंच. Lord, in this matter, the petitioners belongs to the Mandsaur and Rajgarh, which are situated under the jurisdiction of Honorable High Court of Indore bench, my lord. यहाँ क्यों लगा दिया इसको? My lord, may kindly see the memo of petition. इसको इंदौर बेंच में ले जाइए. An objection is raised by learned government advocate involved in the real jurisdiction to hear and decide this case will be with the Indore bench, as petitioners are resident of Rajgarh and Mandsaur. Taking these facts into consideration, petitioner is delegated to avail remedy before the Indore bench. He prays for withdrawal of the petition with liberty to file fresh before the Indore bench. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. 251. In this case, some bus operator complained before the collector Raisen, who has no authority under the Motor Vehicle Act, regarding diversion of the route of my buses, my lord. Thereafter, he sent the matter to the district transport officer Raisen. He sent the matter to the regional transport authority Bhopal. And now, by the impugned order, lordship, my 5 permits has been suspended. Yes. It is suspended, but my submission in lordship, I filed P4 may be seen, lordship, page 18. That abstract copy of Motor Vehicle Act 18, section 86. You are right. But इसकी अपील होती है ST80 में. My lord, suspension के खिलाफ अपील 89 में से लिमिटेड पीरियड में कर दिया, इसमें से सिर्फ 30 तक के लिए. 30 तक के लिए उसमें जो 5 गाड़ी है, एक रूट सेम रूट पे चलती थी, यहाँ पे इन्होंने कर दिया. ST80 में जाके बताइए ना सारी बातें. मैंने मैं सबमिशन 88.5 बस देख लें, 6 देख लें बस. मैंने स्टेट कॉपी पेश की है P4 पेज 18 में. पढ़िएगा क्या? सेक्शन 88(1) का A-B में इन्होंने ऑर्डर पास किया है, और 88.5 में दिया हुआ है वेयर परमिट इज तो आए नहीं आपने 86 का 1A-B से ऑर्डर पास हुआ, इम्प्यूग्ड ऑर्डर. इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है 88.5 का. मेरा कहना है सेक्शन 88.5 even violated the condition of the permit, there is compounding provision, my lord. ठीक है, ये सब बातें जाके ST80 को बताइए. 35 तक का ही परमिट सस्पेंड किया मैंने, उनमें से एक वीकेंड में तो इसी रूट पे चलती थी हमारी गाड़ी. कल जाकर लगा दीजिए ना आपको. प्रेस फॉर withdrawal of the petition with liberty to move an appropriate authority. The aforesaid liberty petition is dismissed as withdrawn. 256. This matter pertains to transfer, my lord.
Annexure P3 is the order, my lord, by which petitioner, who is middle teacher, has been transferred from Sihor to Raisen, my lord. P3 page number? Page number 18, my lord. My lord, annexure P1, page number 12 may also be seen, my lord. My lord, this is the order by which earlier I was transferred from Sihor to Raisen, and that order was set aside by this honorable court. Just Yes. a minute. P1, my lord. By which I was transferred from Sihor to Raisen, my lord, and the order has been set aside by this honorable court only on the ground that this order will adversely affect my seniority, my lord. Here petitioner's contention is that petitioner is aggrieved of transfer order dated 3/5/2023, whereby petitioner has been who is working as a Madhyamik Shikshak in social science is transferred from GMS Hariniyaram Sihor to NMS Ganihari Raisen. Full stop. Earlier in the year 2021, also by order annexure P1, he was transferred At same school. from the same school to the same school, and that order was quashed by a coordinate bench on the ground that will adversely affect seniority of the petitioner. Full stop. They submitted that order passed by a coordinate bench in WP 15794 of 21 is on record as annexure P2. Next para. In the aforesaid order of coordinate bench, reliance is placed on the judgment of High Court in Dhaniram, Airwar and another versus High Court of Madhya Pradesh and another 1995 MPLJ 545, wherein it is mentioned that transfer of an employee should not affect his seniority. Full stop. Placing reliance on the judgment of Supreme Court in Paresh Chandra Nandi versus Controller of Stores, Northeast Railway, Pandu and others, AIR 1971 SC 359, it is held that salary and seniority could not be affected to their prejudice as a result of their transfer to any other department or wing, and thus taking these facts into consideration, coordinate bench had quashed the order. Full stop. There are no changed circumstances. It is admitted that seniority of a Madhyamik Shikshak is maintained at the district level. District and division level both, my lord. डिवीजन तो सेम है जी। नहीं, उसमें ऑर्डर में भी लिखा है कि जो कंडीशन नंबर, आप मुझे बताइए, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्ट बताइए कि कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पर है। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। ये जो कंडीशन नंबर 4 है, इसको देख लें। ये पहले भी कोर्ट ने ये लिखा है, इसमें कंडीशन नंबर 4 में ये लिखा है कि ऑन ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट माय सीनियरिटी विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग। दिस हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय द कोर्ट, माय लॉर्ड। इसे कोर्ट ने यही लिखा है इसमें। Issue notice to the respondents. Let a specific reply be filed by the respondents as to whether petitioner's seniority is maintained at district level or at the divisional level. Your Lord. Till then, operation of the impugned order annexure P3 shall remain in state. Let reply be filed within 2 weeks. List in the week commencing within 3 weeks, but then in the week commencing 19 June 2023. Your Lord. 264. ये कौन सा था? 250. तो नंबर भी सही नहीं लिख पाते। Yes, my lord, this petition is being filed by challenging the order dated 27 to 1981, my lord. My lord, petitioner's father was the police constable, my lord. तो ठीक है, अभी आप ये बताइए। Yes, my lord. रिलीफ क्या सीख कर रहे हैं आप? For quashing of impugned order, my lord. 1981 का है ना? Yes, my lord. But the respondent from payment of PF are registered AD post within 7 days, returnable 6 weeks. This transfer method. I am the secretary of Gram Panchayat, Lordship.
And one letter that has been taken on the pressure of the minister, the lordship, because he is transferring his own relating in my place, the lordship, on WhatsApp. Contention is that he is aggrieved of order dated 1/5/2023, wherein petitioner, who is working as secretary of Gram Panchayat Sadiya, Madhya Pradesh, Ramnagar district, Satna, is being transferred at his own expense to Gram Panchayat Belhai, Madhya Pradesh, Ramnagar district, Satna. So to accommodate, इसको ला रहे Ramashtra Kushwaha, who is related to the minister concerned. Full stop. It is submitted that petitioner had never made any application for transfer on his own expense. And with a view to accommodate nominee of the minister concerned, petitioner is being disturbed. Full stop. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, as far as operation of the transfer order annexure AP1 dated 1/5/2023 is concerned, it shall remain state qua the present petitioner and the private respondent Rama Ashram Kushwaha. My humble request to the lordship may be permitted because the lordship, this petition he gave me because due to my death of my mother, some 15 days that has been disturbed the lordship. क्या हो गया? तो नहीं मेरे कोई पिटीशन दे गए थे जो कि मैंने क्या किया है? नहीं परमिटेड टू वर्क कर दे, परमिटेड टू स्टे कर दिया है, इतना पर्याप्त होता है। लॉर्डशिप चलिए ऑब्लाइट सर्टिफाइड। लॉर्ड इसे इसलिए है कि बाजार के बाजू में हमारी जमीन थी लॉर्ड, पेज नंबर 25 में लॉर्ड, P1 25 इसमें चौहद्दी दिखाई गई है सरकारी बाजार में लॉर्ड, और उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लॉर्ड, उसमें पर रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए बोल देते हैं। श्री AP Shah, learned counsel for the petitioner. Petitioner's contention is that there is some dispute in regard to construction. Full stop. Petitioner has already made a representation to the collector Singrauli as contained in annexure P4. Full stop. Submitted that collector Singrauli be directed to decide the representation through a speaking order within some prescribed time period. 7 दिन 15 दिन। लॉर्ड इसमें एक निवेदन था लॉर्ड, कंस्ट्रक्शन चालू है, उन्होंने भाई फोटोग्राफ लगाया है, उसको कब तक रोक देने वाले भाई? अगर वो होगा तो रजिस्टर करेंगे। If it is found that petitioner's land is being encroached, then collector shall ensure that his land will be restored to its original condition after giving notice to the concerned opposite party. चलिए, this was 272 राहुल मिश्रा। क्या है ये P1? Lord, by the order P1 and P2, the DO is directed to lodge FIR against the petitioner lordship. ठीक है फिर। Lordship, my submission lordship that the petitioner is to retired on 13/3/2030, and lordship the some amendments were made in the Samvida Sala Shikshak rules 2005. which were never came to the knowledge of the applicant. FIR कैसे दर्ज होगी? दिखाइएगा, लिखिएगा issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks, to show that as to under which provision of law FIR can be lodged against the present applicant. Show cause note, let reply be filed within 3 weeks. In the meanwhile, operation of the impugned order shall remain stayed. Obliged. 274. Manoj, the case of the petitioner is that his private land is being used for construction of a lake Manoj, Amrit Sarovar mein. My representation is Manoj on Exhibit P6. Shri Aditya Narayan Sharma submits that petitioner's allegation is that his private land is being used for purpose of a pond under कौन सी स्कीम? अमृत सरोवर में। अंडर अमृत सरोवर। आपको अमृत दे रहे हैं, उसके बाद भी आप तैयार नहीं हैं? सर वो सरकारी लैंड में बनना है, प्राइवेट लैंड में नहीं बनना है। अरे अमृत तो किसी को जहाँ पे भी मिलेगी। He submits that he has already made a representation to collector. तहसीलदार मनोज, copy to collector, Annex P6.
representation annexure P6 to the concerned Tehsildar Biohari district schedule, he be directed to decide said representation without commenting on merit. 7 दिन, 30 दिन. This is defendant's second appeal. Wala suit was filed by the plaintiff, respondent number 1 and 2. Second appeal है ये. Yes, ma'am. First time listed. देखिए, issue notice to the respondents, call for the record and list this appeal along with record. And status को maintain because Substantial question of law बिगड़ बने कोई. any week commencing में देखा after opening वाला. List in the week commencing in July 2023. My lord, 15th June is the date for partition because they have started the proceeding for partition. The week commencing 12 June कर दीजिएगा. 291. ये सीमांकन का प्रकरण लॉर्डशिप बिना हमको पक्षकार बनाए लॉर्डशिप, और जो जमीन की हम भूमि स्वामी है लॉर्डशिप. आप इसमें अर्जेंसी की एजेंसी ये है लॉर्डशिप की. अरे भाई वकील साहब जी जी 28/2/2023 का आदेश है. एप्लीकेशन में क्यों सुनेंगे? नहीं, हम इसलिए कि हमने पहले भी लगाया था लॉर्डशिप, और कैविएटर खड़े हुए लॉर्डशिप, कैविएटर खड़े हुए, उन्होंने टाइम मांग लिया पहली बार कि हम जवाब देंगे, तो जवाब के बाद फिर केस नहीं लगा लॉर्डशिप. और मैं केस लगता था, लेकिन चूंकि एक बार लग जाता था तो ऐसा नहीं. अर्जेंसी इसमें आदेश देख लें लॉर्डशिप, अर्जेंसी क्या है. बताइए. आज ये आदेश में ये कह दिया है कि जो सड़क बनी है लॉर्डशिप उसको खोदने का आदेश कर दिया लॉर्डशिप. हाँ है आदेश. ये आदेश है एक जो है ये 28/2/2023 का पेज नंबर 67 से शुरू होता है लॉर्डशिप, और इसका रिलेवेंट जो है ये पारित किया ये आदेश लॉर्डशिप. किसने पारित किया ये एसडीओ ने किया. तो इसके खिलाफ अपील होती? अपील नहीं होती लॉर्डशिप. इसकी कोई अपील अमेंडमेंट हो गया सर उसमें. अब कोई अपील कोई रिवीजन नहीं. अमेंडमेंट हो गया सर वो उसमें एक्ट में. अच्छा 28/2 का आदेश है, लिखिएगा. हर्ट श्री इतना शंकर दयाल मिश्रा forward is appearing for the respondent private caveator, taking this fact into consideration that some change is sought to be made by the concerned subdivisional officer Hanumana district. It is directed that order dated 28/2/2023 passed by the subdivisional officer Hanumana shall remain state till next date of posting. List on 3 July 2023. 305. Last order sheet may kindly be seen, my lord. I have been placed under suspension on 8/1/2022, and after 4.5 months, I have been served charge sheet, my lord. From that date, there is no progress in the departmental inquiry. My lord, I am only seeking direction. List immediately after ensuing summer vacation. My lord. 314. Actually, P मध्ये impugn order lordship, where the right of the applicant has closed down for record his defense in lordship, and a matter has been posted for final argument. कब क्लोज हुआ था? सर ये 9/5 को क्लोज हुआ था, उसके बाद 19/5 के लिए रखा था. अब कोर्ट ने 26 कल की डेट में रखा है फॉर फाइनल आर्गुमेंट के लिए. क्या कर सकते हैं अभी? सर अभी ऑर्डर पढ़िएगा जरा. जी मैं अनादे की ओर से एक आवेदन पत्र पेश कर लेख किया कि अनादे को उल्टी दस्त बुखार से पीड़ित है, अतः साक्ष्य हेतु समय दिया जाए. प्रकरण का अवलोकन किया गया. प्रकरण में अनादे को पूर्व में साक्ष्य हेतु लगभग 5 अवसर दिए जा चुके हैं, अतः किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है. ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है. लॉर्डशिप उसके पहले वो 29 तारीख को अपील हुआ था. क्या कर सकते हैं सर उसके पहले 29 तारीख को अपील हुआ था. कुछ है नहीं इसमें. सर उसके पहले वो 29 तारीख को अपील हुआ था, वो कोर्ट वाज नॉट सिटिंग. सारी टेक्निक जानते हैं कि ये मेंटेनेंस का अमाउंट ना देना पड़े उसके लिए क्या क्या किया जाता है. सर मेरा कहना है कि सर अगर कुछ चैलेंज करिएगा ना, ऑर्डर जब मेंटेनेंस का हो जाएगा तब. तो मैं कह रहा हूँ कल ही लगा तो कल हम साक्ष्य रिकॉर्ड कर ले. सर मैं नहीं कोई जरूरत नहीं है. आप 5 बार क्यों नहीं गए?
सर ये सर यहाँ पे 29 तारीख को हम गए थे सर। गए होंगे आप सर उस दिन कोर्ट नहीं था। कोर्ट जब रहेगी तब आप क्यों नहीं गए 5 सर और 10 तारीख को सर वहाँ पे स्ट्राइक थी। ठीक है चलिए 10,000 रुपए कॉस्ट देंगे सर। ये लीगल वो जो क्लाइंट इज नॉट वेबल टू पे द कॉस्ट, वहाँ पे सर वो लीगल एड से लड़ रहा है नीचे। हाँ तो कुछ है नहीं इसमें, उसको लीगल एड से लड़ने दीजिए। सर कुछ आप कॉस्ट कम कर दीजिए सर। नहीं 5,000। श्री राहुल देशमुख लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner. This petition is filed under section 482 being aggrieved of order dated 9/5 your lordship. 9/5/23 passed by additional family court judge Bhopal, closing the right of the present petitioner husband to lead evidence on the ground that he was given sufficient opportunity to lead evidence, but he failed to avail said opportunities. Full stop. He does not suffer from any serious ailment and therefore rejected the application. I do not find any ground to cause interference in the said order in the supervisory or extraordinary jurisdiction of this court. Full stop. Applicant cannot keep his wife waiting for her right to claim maintenance on flimsy and artificial grounds. Full stop. It is evident that MJC 917 of 2018 was filed by his wife after waiting for 5 years. सो उनका क्रॉस ही सर 2022 में रिकॉर्ड हुआ। ठीक है आप 5/11/2022 को क्रॉस रिकॉर्ड हुआ। After waiting for 5 long years, if the impugned order is passed, then that cannot be said to be arbitrary or illegal. Calling for petition fails and is dismissed. मालूम में impose a cost some नहीं छो खत्म हो गया, वो राइट खत्म हो गया। चलिए in that case withdraw your lordship, simple withdrawal कर दीजिए। At this stage he prays for withdrawal. Application is dismissed as withdrawn as well. What? Well, this application is under section 483 of CRPC seeking direction to expedite the trial, my lords. I am for the accused persons. Shri Harshad Bari. Harshad Bari prays for directing the trial court to expedite the trial. This prayer is not opposed by Srimati Nalini Gurung, appearing for the state. Accordingly, learned कोर्ट का शुभ नाम क्या है? My lords, Rizwana Kosar, my lords, I believe. Judicial Magistrate First Class Dindori. Where केस नंबर क्या है इसका भाई? My lords, RCT number 1482 of 2017. Number 1482 of 2017. 2017 is pending. Be expedited and if possible, proceedings be concluded within period of 6 months from the date of receipt of certified copy of the order. Grateful, my lord. Court has not expressed any opinion on merits. Suspension of sentence under section 3 suspension of sentence case reason 389 कोर्ट तो बुलाने दीजिए, इसमें लिखिएगा नाम बताइए। रूप सिंह मरावी। श्री रूप सिंह मरावी appeal is admitted for final hearing. Call for the record and list this case for consideration of the application for suspension along with the record. 29/6 अरे भाई इस पे ऑलरेडी आप कुछ तो बताया करिए। 12/5 का है ऑर्डर, ऑलरेडी सस्पेंड है इसमें। जी लास्ट 29/6 तक सस्पेंड है। 3 है लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 19 जून 2023 टॉप ऑफ द लिस्ट। चलिए 331. The appellants are convicted under section 325 for 3 years, Mala. 5/6/2023 तक 5/6/2023 तक ऑलरेडी सस्पेंडेड। वो ऑर्डर कर दीजिएगा 5/6/2006 तक ऑलरेडी 23 तक ऑलरेडी सस्पेंड। 3 years of suspension. 50,000 two sureties shall appear before the trial court on 7 August 2023 and the date so fixed by the trial court. Call for the record. एक सेकंड सुनिए, उस लड़के के साथ में जाती है जा रही है वो जो था ना इसके पहले वाला क्या नंबर था? 317 में भी कर दीजिएगा ऑर्डर सस्पेंशन का। 317 में भी सेम ऑर्डर सस्पेंड ऑलरेडी सस्पेंडेड है।
जी सर। आपको सेम ऑर्डर कर दीजिएगा 317 में बता दीजिएगा उसको। My lord, my case is covered with the judgment of my lord, in which my lord the recovery has been directed to made the widow lady of the my lord the employee after my lord the more than my lord the 2021 का केस आज नहीं सुनेंगे। What happened my lord? उसके 5 साल बाद भी पेंशनरी बेनिफिट सेटल नहीं हुए। ठीक, कोई बात नहीं, इसको वेकेशन आपका देखें my lord, आपका जजमेंट सॉरी होगा जजमेंट वेकेशन के बाद। 2021 का केस समर वेकेशन में और उसमें क्या हुआ, उसके बाद लगा ही नहीं सुनवाई, नहीं लगा तो समर वेकेशन में थोड़ा ना लग जाएगा। तो मेरा निवेदन है आपका फैसला यदि देखेंगे तो यही का यही है बिल्कुल। I will not apply even my own judgment during summer vacation. I am not obliged to hear these cases. List after ensuing summer vacation. More than 1 year time passed but respondent not complied order passed by this honorable court immediately after ensuing summer vacation. I am for respondent on the basis of entry model lordship. The petitioner is working on the both of Kotwal lordship. आपने फाइल किया है क्या? आउट ऑफ टर्न मेंशन आपने किया है? यस लॉर्डशिप। पिटिशनर को इन्फॉर्म कर दिया था आपने? यस लॉर्डशिप। वन फॉर द पिटिशनर श्री योगेश मोहन तिवारी for the respondent number 5, 6 and 7 as nobody is appearing for the petitioner, though Shri Tiwari submits that he has already informed the learned counsel for the petitioner. List this case immediately after summer vacation in the week commencing 12 June 2023. क्या अर्जेंसी है इसमें? लैंड एक्विजिशन वाली ये क्या अर्जेंसी है इसमें? 2022 इसमें there is no urgency in the matter. ये 9/12/22 after entering summer अलग 9/12/22 का ऑर्डर इसमें 2 वीक का आपने टाइम दिया था रिप्लाई फाइल करने। समर वेकेशन में नहीं सुनेंगे, समर वेकेशन के बाद बताइएगा। 355 In this matter, also on 9/5/2023, notices have already been issued, Your Lordship, and on the last date they were directed to make the amendment in the petition as respondent number 3 has 4 made a party by name, the Sarpanch and Secretary of the Gram Panchayat. So they were directed to move an application for amendment, and I was directed to seek instruction as notices are not served. So I have seek instruction from, I am having telephonic communication with respondent number 2 also, Your Lordship. So respondent number 1 and 2 has not play any role in the allotment process of the Gram Panchayat shops. It is the role played by respondent number 3 and 4. So I also made telephonic communication to respondent number 3. He instructed me, Your Lordship, that in the year 2003, for a period of 12 years, the shops was allotted to the petitioner, Your Lordship. After that, he was regularly paying the rent, even after expiry of 12 years. But no, कोई नया अनुबंध किया नहीं गया था. तो अभी इनने ये किया कि 1,000 रुपये 533 रुपये किराया था, तो इन्होंने 1,000 रुपये का किराया बढ़ा के इनको कहा, इनके साथ 51 लोग और हैं, इनको कहा कि आप नया अनुबंध कर लीजिए. उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज किया नहीं गया. टोटल 51 लोगों में से 40 लोगों ने नया अनुबंध कर लिया, बढ़ा हुआ 1,000 किराए पे. इनने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नया अनुबंध नहीं करेंगे. ये कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा 4-4.5 लाख रुपए मांग रहे थे, आप नहीं मांग रहे. अब ये क्या है, आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ. जब इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, 40 लोगों ने कर लिया, तो P1 का इनको नोटिस दिया कि हम नई नीलामी नया आवंटन कर रहे हैं, उसमें आप दुकान की जो टोटल कीमत है वो 10 लाख रुपए है, आप 4,65,000 जमा कर दीजिए, प्राथमिकता हम आपको दे देंगे. इन्होंने वो भी नहीं किया, ये यहाँ आ गए. अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि जो नई अनुबंध के लिए नीलामी उद्घोषणा की है, तो उसमें 32 लोगों ने 5 लाख के ऊपर लेने के लिए चालान भर दिया है. भर दिया तो ठीक है, सुनेंगे फिर आपको. और क्या जी, और फाइल कर दीजिए, जवाब फाइल कर दीजिए. जवाब अभी हाँ हमने OIC अपॉइंट करने के लिए बोल दिया है. जवाब फाइल कर दीजिए, इमीडिएटली आफ्टर वेकेशन लगा देते हैं. जी ठीक है. ये नोटिस में हमने सुन लिया ना, बताइए ना क्या सुनना है आप. ये नोटिस में लॉट P2 देख रहे हैं जरा. P2 के तहत ये कहा कि सबको जितने लोग 51 लोग हैं
सब कोई बढ़ा हुआ 1,000 जमा करे। हमने जमा किया, सबने जमा किया। आपने जमा किया बताइए। हाँ, हम ये P5 देख लें मिला। P5 पेज नंबर P2 नहीं यार, पेज नंबर P5 है। ये पुरानी P5 देख लें मिला। पुरानी रसीद है। अरे नहीं दिखाता हूँ यार, बोलने दीजिए अमित जी, बोलने दीजिए उनको। अब आप बोल चुके खूब। ये देख लें सर, P5 में पेज 25। ये इकट्ठा हमने 4 महीने का किराया तक जमा कर दिया, 7,665 रुपया। 4,000 वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे वो सब जमा कर दिए। अब इनने क्या किया, इन 6-7 लोगों को तो कंटिन्यू नहीं किया, 43 लोगों को कंटिन्यू कर दिया। इसके लिए P6 देख लें मिनट में। P6 देखिए, श्री राधेलाल गुप्ता learned counsel for the petitioner. Petitioner's contention is that he deposited the rent, but still he has not been given renewal like similarly situated persons, and shops have been put to auction. Full stop. Shri Amit Sharma, learned government advocate, in his turn submits that respondent number 1 and 2 have no role in the matter. He has instructions from respondent number 3, who was informed that since petitioner had not deposited the rent amount in time in compliance of communication and Annexure P2, shops were put to auction and several persons have deposited the minimum base price for auction. Full stop. Keeping all these issues intact, comma, it is directed that since it's a contesting matter and petitioner on the one hand submits that he had deposited the rent in time, yet he has been denied renewal, whereas respondent's case is that petitioner had not deposited the rent nor had entered into a fresh agreement, had not deposited the enhanced rent of rupees 1,000 per month, nor had entered into an agreement. Therefore, parties are directed to maintain a status quo till next date of listing. List this case in the week commencing 10 July 2023. Your Lordship, authorized. Number 386. Wait, please, Your Lordship. My Lord, may I see the last order sheet, my Lord? Rental council. Yes, my Lord. Now they have filed a reply and they say that it is not the issue of eligibility. They say that there is no vacant post available and in one post 2 persons were working. That's a wrong statement, my Lord. I have filed an IA for taking. If my Lords may see the reply, man. Reply कहाँ है, कब फाइल? आज 1 बजे इन्होंने कॉपी दी है. कॉपी हमें भी नहीं दी गई है. I apologize. क्यों नहीं दी गई? I've supplied a copy to. Let copy of the reply be brought on record. List on 29 मई. My Lord, it will be on 5th, my Lord. 29 मई को आने दीजिए. Top of the list कर दीजिए. My Lord. चलिए. डिस्प्यूट है 198 के कारण सेवा से पृथक कर दिया मैंने और उसमें दोष मुक्त हो गए हैं. 2018 की केस में आज क्या अर्जेंसी है? सॉरी. लिस्ट बिफोर रेगुलर बेंच. फिक्स डेट दे दें मैंने. लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 3 जुलाई 2023. चलिए. My Lord, first bail application under section 439 and the offences the Excise Act of 34(2), my Lord. My Lord, the quantity is 55 liters, my Lord, and it is the first इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई. ये चार्जशीट पेश नहीं हुई सर. तो वेट करें फिर. List this case after entering summer vacation. Number 372. My Lord, next week कर देते my Lord इसे. चार्जशीट पेश हो जाए उसके बाद वेकेशन के बाद. My Lord हो जाएगी अभी next week में. हो जाएगी तब आएगी सर. 372. Lord, order annexure P6 page number 25 is under challenge in this petition. P6 page number 25 is under challenge in this petition, whereby my application under order 41 rule 5 has been dismissed by the lower appellate court, and there's degree of disposition against me. P5 page number P6 page number 25. पढ़िएगा. 6/5/2023. I am reading the finding of the court. Very last paragraph. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपील में सफलता मिलने की पूरी संभावना एवं अपूर्ण क्षति होने के आधार पर निर्णय एवं डिक्री का निष्पादन रोकने का निवेदन किया गया है, किंतु किस प्रकार अपीलार्थी को अपूर्ण क्षति होने की संभावना है, इस संबंध में कोई तथ्य आवेदन में लेख नहीं किए गए हैं, ना ही ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं.
इस प्रकार अपराधी द्वारा प्रस्तुत दिया गया हेतु पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है. Now, my lord, may kindly see the judgment and decree passed by the trial court, page number 16, back side. एक मिनट जाइए. Page number 15. Page number 16, 16, back side of page number 16, para number 14 of the trial court judgment. This is the decree. अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार कर निम्न आज्ञा किया जाता है और यह घोषित किया जाता है कि वादी शिवचरण पुत्र राम सिंह लोहार वादिराज भूमि प्रसन्न नंबर 500 रकबा 500 स्थित ग्राम कठौ पहाड़ी तहसील निवासी का भूमि स्वामी है. ब प्रतिवादी क्रमांक 1 वृंदावन को निर्देशित किया जाता है कि वह वादिराज भूमि का रिक्त आधिपत्य तत्काल वादी को सौंपे. एनक्रोचर को क्या राइट है? पार्डन सर, एनक्रोचर को क्या राइट है इंजंक्शन का? आप अपना टाइटल बता दीजिए इस जमीन पर. मतलब the case of the plaintiff was that he was given पट्टा by the state government. हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपका राइट बता दीजिए. 547/2/4 में आपका क्या राइट है? पट्टा है, अधिकार है? मतलब keep it after vacation, I'll file the पट्टा of the. नहीं, अभी बताएं. अभी तो ये अभी डिसाइड हो जाएगा ये. I'll not keep it pending. Show your title over the land. The finding of the title is against me because the finding by. इसको withdraw करेंगे कि मुझे खारिज करना है? I'll withdraw it. Chiparasnath Das, when asked to show title of the petitioner over the land contained in survey number 547/2/4 measuring 2.023 hectares at village Kathau Pahadi, Tehsil Niwadi, prays for withdrawal of this petition. Accordingly, miscellaneous petition is dismissed as well. Taken up after vacation, it's a contempt. It can wait. It's a contempt, my lord. It can wait. It may be taken up. 374 में लिख लीजिएगा list after ensuing summer vacation. This is petition. As per P5 is the impugn order, lordship. Impugn order, it means lordship the not permitted to overage of the fill up the form, lordship. P5 lordship. इसमें lordship ये your age is 45 years 2 months 28 days, which is greater than 45 years. Second page में भी है lordship ये petitioner number 2 का. So I am seeking as per P6 lordship due to COVID lordship. क्या है? P6 पेज नंबर 53 लॉर्डशिप. क्या किया इन्होंने? इसमें लॉर्डशिप 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था और उस बेसिस पे प्री एग्जाम हमने दिया था, उसमें हम सेलेक्ट हुए थे एज पर P1 जो था लॉर्डशिप. P3 से लॉर्डशिप हमारी मार्कशीट इसमें डेट है क्योंकि लॉर्डशिप फॉर्म भरने की 1/6 लास्ट डेट है. Notice to the respondents. Notice is waived by Srimati Swati Singh George for respondent number 1, 2, 3 and 4. ये कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए कौन अपियर होते हैं? श्री राहुल दिवाकर. उनके कोई जूनियर है? बुला दीजिए उनको. हाँ, एक्सेप्ट उनका नाम डाल दीजिएगा पूछ के जो जूनियर अपियर होंगे. Accepts notice on behalf of respondent number 5. Petitioner's contention is that in terms of GAD circular dated 18 September 22, due to COVID-19, 3 years relaxation has been given up to December 2023 in the maximum age limit. Full stop. Petitioners have just crossed the maximum age limit of 45 years by 2-3 months, and therefore they are entitled to relaxation in terms of GAD order dated 18 सितंबर 2022. नंबर डाल लेना P6 का, देख के पेज 53 पर है. As an interim relief, it is directed that petitioners be provisionally allowed to fill the form subject to the outcome of this petition. Okay. My lord, in this petition, Your Lordship, the petitioner has been appeared for PSC 2019, Your Lordship. He has been qualified the prelims examination. Thereafter, he has बेस वाला वही है. हमारा ऑर्डर दे दीजिए वही. My lord. सेम ऑर्डर करना है. सेम ऑर्डर हो गया खत्म.
बच गए भाई, देखिए 114 भी दे दीजिए। सर इसमें 2 किलो गांजा जब्त हुआ था सर। इसमें सर 10/2/2022 से जेल में है सर। और इसमें सीजर विटनेस और विवेचक दोनों हो चुके हैं सर। थर्ड बेल तो वहीं सुनी जाती है जहाँ पर पहली 2 हुई है। हाँ सर, आप ही के पास थे सर। आप ही ने उसमें लिबर्टी दी थी कि विवेचक के बाद आ जाइए और सीजर विटनेस के बाद। तो 2 किलो गांजा, 2 किलो गांजा इनकी कस्टडी से हुआ है कि मेमोरेंडम पर है ये? जब्ती से नहीं से हुआ। ठीक है, लिख लीजिएगा इन कस्टडी से 10/2/2022। आईओ इज ऑलरेडी एग्जामिन्ड। यस, आईओ ने सपोर्ट किया है। आईओ इज एग्जामिन्ड। सीजर विटनेसेस आर होस्टाइल। ट्रायल इज गोइंग टू टेक टाइम। एप्लीकेंट इज इन कस्टडी सिंस नाइट। 2 किलो गांजे का है। देयर इज नो क्रिमिनल हिस्ट्री। 1,02,000 क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है? एनडीपीएस का नहीं है सर। नो केस है मतलब एनडीपीएस केसेस कर दीजिएगा। चलिए, है क्या गलत है? ये तरीका गलत है। ये आपने बोला कि 60 क्या है ये? नंबर 161 none for the applicant. Case is adjourned. List after ensuing summer vacation. My lord, in item number 369, my lord, kindly call a record and kindly give a date for week commencing. आपने मेंशन क्यों नहीं किया था मैडम टाइम पे? सर मैंने अभी रिक्वेस्ट के टाइम डाल दीजिएगा। Issue notice call for the record list after ensuing summer vacation. My lord, item number 247, my lord. My lord, it's a fresh contempt petition, my lord. Notice is required to be issued, my lord, in the 247 में इनका नाम डाल दीजिए। बालाजी किलावा। Issue notice call for the record. Notice on payment of PF by 7 days, returnable 4 weeks. List along with WP देख के डाल दीजिएगा नंबर। effective any week commencing. Highly applied. आ गया मैडम। शाम करो ना। यस, नहीं घूम पाओगे। कहाँ गए? वहाँ से जाके शॉपिंग हो जाएगी ना, तब मंगा लेंगे उस दिन में। अपन नहीं करेंगे तो अपने आप है। चले सर। क्या भैया, क्या दिख रहा है? एक आप इसका लास्ट में नोटिस हो गए, आप बताओ। 247 हाँ 247 247 मेरा नहीं था। सिक्योरिटी एक और मैडम का हुआ था 247 नोटिस 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 करो। एक सेकंड मुझे 360 मुझे भैया इसमें 369 में नोटिस किया। तो नोटिस अपन को देना पड़ेगा। नोटिस सर्विस नहीं करा। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। सर्विस नोटिस एससीएसटी सर
तो भैया आ गए बड़ा हो गए। 369 की फाइल कहाँ? फाइल तो आई नहीं है। फाइल नहीं आएगी भैया। 22 तारीख की डायरी थी हमारी। सवाल कहाँ गया अभी? अरे रखो यार, 3 लगा के दे दो। डायरी पे चाहिए पड़ेगी तो बताओ। आ रहे हैं भैया। एक 22 तारीख की डायरी थी हमारी। डायरी भर दिए। कहीं बंद फाइल में बंद तो नहीं गई?